तो गाइस हम आ चुके हैं लाइव। वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हम स्टूडेंट क्लास को उसके साथ ऑपरेशंस कर रहे थे। ये हमारा फायरफॉक्स किधर चला गया? तो ये बंद कर दिया मैंने, कोई नहीं, हिस्ट्री से दोबारा चले जाएंगे। स्टूडेंट क्लास से हम कंटिन्यू कर रहे थे, हम कार कार के अंदर थे। कार जो भी हमारा हमने फोल्डर बनाया जिसमें हम ऐप डॉट जावा में स्टूडेंट क्लास को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं हिस्ट्री में चले जाता हूँ। हिस्ट्री में जावा कोर्स 7 घंटे का कोर्स कर लिया है, 12 घंटे का टोटल, 5 घंटे बाकी है, कर लेंगे, निपटा लेंगे आज ही गाइस, टेंशन नहीं है। use this dot name plus the text of is वॉइड स्टडी डाल रहा है, अच्छा ठीक है। 2 की स्पीड कर लेते हैं अपनी। studying. हाँ, Let's delete these print line statements. We'll take student1, call the study method. तो हटा देता है सब कुछ ये भाई, तो मैं भी हटा देता हूँ इतना कुछ जो भी एक्स्ट्रा है। एक तो गाइस सर्दी कैसे लग रही है यार, मैं हैदराबाद में हूँ गाइस, और यहाँ पे सर्दी हो रही है, बहुत सोचने वाली बात है। 22 फरवरी आ गई है guys। तो जहां तक हम सोच रहे थे, स्टूडेंट वन वन डॉट स्टडी, अच्छा, तो एक स्टडी क्लास बनानी है, कोई स्टैटिक करने की जरूरत नहीं, स्टैटिक का बाद में देखेंगे क्या होता है। वाइड स्टडी है ना, सिस आउट स्टूडेंट, क्या आउट होता है? Following. हाँ, यहाँ पता चल Let's check our जाएगा। name attribute, but I'm going to use this dot name plus the text of is studying. स्टडी, अच्छा ठीक है, दिस डॉट नेम प्लस इज स्टडिंग, दिस डॉट नेम इज स्टडिंग, ओके। स्टूडेंट स्टूडेंट 4 इक्वल्स, नहीं नहीं, हम यहीं से ले लेंगे, पहले पूरा 5-10 मिनट देख लेता हूँ, चलो ठीक है। Let's delete these print line statements. 7-5 तक We'll रखेंगे। take student1, call the study method. Then we'll do this with student2 and student3. ओके, SpongeBob is studying, Patrick is studying, Sandy is studying. After assigning values to your attributes using a constructor, you can use them within methods too, or change them. This refers to the object. नहीं नहीं, तो एक कॉमन चीज सिखा रहा, कुछ नई चीज सिखाऊंगा तब कोड करता होगा इस, ये फिर हम ना वही सेम चीज पे रिडंडेंटली कोड करेंगे, स्टूडेंट वन डॉट स्टडी, मतलब ये तो हमें पता ही ये काम करेगा ही। दिस इज लाइक टू ऑब्वियस। स्टूडेंट टू डॉट स्टडी, स्टूडेंट थ्री डॉट स्टडी, SpongeBob is studying, okay। अब चलाएंगे तो ठीक आएगा, SpongeBob is studying, Patrick is studying, Sandy is studying, तो We're currently working with, if student3, meaning Sandy, was to call her study method, imagine we're replacing this with student3, student3's name attribute. All right, everybody, those are constructors. They're a special method found within a class to initialize objects. You can pass arguments to a constructor when you initialize them. They're used to set up the initial values when you construct an object. A constructor is automatically called when you create a new object, but you need a matching set of arguments if there's any parameter set up, just like any other method. By using a constructor, we can create objects with unique values. And well, everybody, those are constructors in Java. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, just get Grammarly. It's free. I don't need better grammar. I need an A on this essay. What is going on, people? Today I'm going to explain overloaded constructors. Overloaded constructors allow a class to have multiple constructors with different parameter lists, अच्छा much like ठीक overloaded है। methods. They enable an object to be initialized in various ways. Here's a demonstration. We're going to create a new class. Let's go to File, New, Java Class. We will create a class for users. We will create a user class. Let's say that users अच्छा have three ठीक, things. They will have a string of username, a string of email, and an integer, int age. Let's say that when we create a user object, these three मैं 7-10 को करेंगे fields गाइस, are optional. जो भी If करना these three होगा। attributes are optional, we may or may not receive them when we construct a user object. So let's do this. Let's create a constructor if somebody were to create a user object with just a username. To create a constructor, we type the name of the class, in this case user.
we need to set up a parameter for our username. We will receive a string of username. We will assign this.username equal to the username that we receive as an argument. Let's go back to our main Java file. We will create a new user. We need to set the username that we receive with just a username. To create a constructor, we type the name of the class, in this case user. We need to set up a parameter for our username. We will receive a string of username. We will assign this.username equal to the username that we receive as an argument. Let's go back to our main Java file. We will create a new user. Let's say user1 equals new user. We're receiving a warning though. In order to create a user object, we have to pass in a string of username. Let's say that our user is going to be SpongeBob because that's the first thing that came to mind for me. We'll use इसने डेफिनेशन क्या लिखी थी we will ओवरलोडेड receive a क्लास string स्ट्रक्चर? of अच्छा ठीक है, we will ठीक create a है। new user. Let's say user1 equals new user. We're receiving a हाँ, warning though. In order to create a user object, we have to pass in a string of username. Let's say that our user is going to be SpongeBob because that's the first thing that came to mind for me. We'll use this constructor where we have a username. We can also set up the default values for our attributes too. Let's say this.email equals a string of not provided. हाँ, This.age equals 0. Going back to user1, I will output the following. User1 dot username, user1's email, user1's age. Here's what we got currently. Username is SpongeBob, email is not provided, age is 0. These attributes were optional. When we construct this object, we're just assigning them to some default values. What if we create a user that has an email? Well, we could create another constructor with the same name, but we need a different set of parameters. This is very similar to method overloading. You can have methods with the same name, but they need different parameters. Not only do we have a string of username, we'll have a string of email. Our email attribute equals the email that we receive. We can use either of these constructors depending on the arguments that are passed in. Let's create a second user. User2 equals new user. The username will be Patrick. Patrick's email is, let's say p star at, Patrick is probably still using AOL for some reason. Let's say AOL.com. Then we'll print user2's attributes. User2.username, user2.email, user2.age. Here's what we got. We have all the attributes for user1 and user2. Patrick, p star at AOL.com. Our age is still 0. We can create different objects with a varying number of arguments. Let's create a third user. This time we'll have a parameter for our age attribute. I'm just going to copy this because I'm lazy. We'll have an int age. We will assign our age variable with the age argument we receive. We'll create user3. User3 equals new user. Username will be Sandy. Email will be scheeks at gmail.com. Then an age, let's say 27. Then I'll print user3's attributes. User3.username, email, then age. Here's all of Sandy. बेसिकली ये तो हम भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं भी यूजर बना लूंगा। यूजर्स, यूजर है कि यूजर है? यू यूजर, इट्स यूजर। ओके, यूजर रीनेम डॉट जावा। लेकिन इसमें कुछ आया नहीं ना, तो अब हम लोग डिलीट करना पड़ेगा इसको। इसको मैंने डिलीट मार दिया यार। इसको मैंने करा यूजर डॉट जावा, और इसमें क्या करना है? स्ट्रिंग नेम इन स्ट्रिंग ईमेल यूजर नेम ईमेल और इंट एज। 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर बनेंगे। यूजर स्ट्रिंग यूजर नेम, दिस डॉट स्ट्रिंग ऐसे होगा, स्ट्रिंग दिस डॉट यूजर नेम इक्वल्स यूजर नेम, दिस डॉट ईमेल equals
dot email equals not provided. This dot age equals 0. Similarly, मैं यहाँ पर बना सकता हूँ string username और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ string email. ये दो प्रोवाइडेड है, बाकी तीसरा प्रोवाइड नहीं है. username equal to this dot username. Okay, this dot username equal to username. This dot email equals to email. और हमारा यहाँ पे age equals to still 0. एक और कंस्ट्रक्टर बना देंगे, ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट हो गया. ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट हो गया. यूजर string username string email and age. So this dot username equals to username. This dot email equals to email. This dot age equals to age. Start fine. अब मैं इसको हटा देता हूँ. पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, फिर मेरे को थोड़ी आसानी होगी. हाँ, तो यूजर 1 equals to new user. क्या डालूं मैं? बैटरी तुरंत कम होने लग गई गाइस. लगा दिया चार्ज में अभी. ठीक है. स्पॉन्ज बॉब. ठीक है. यूजर 2 न्यू यूजर. यहाँ पे हम पैट्रिक डाल देंगे. पैट्रिक यूजर 3 न्यू यूजर. यहाँ पे क्या डाल सकते हैं हम लोग? सैंडी. और एरे इसमें भी डालना था ना मुझे. पी स्टार @aol.com. इसका ईमेल क्या था? एस चीक्स करके था. scheeks@gmail.com. अच्छा. और एज तो 27 है. एस चीक्स gmail.com. और एज हमने दे दी 27. यार ये बार बार प्रिंट करने से अच्छा मैं फंक्शन नहीं बना दूं. void show details. और इसमें जाएगा हमारा सिस्टम sysout. The username of this user is plus this dot username, है ना. इसको फॉर्मेट कर देता हूँ मैं. %f/n. है ना. ये थोड़ा स्पेस दे देता हूँ. email of this user is %s. यहाँ %s आएगा.
तो दिस डॉट ईमेल /n, the age of this user is परसेंटेज इंट का फॉर्मेट भूल गया भाई मैं, डी होता है ना, परसेंटेज डी होता है भाई, मेरे को यहाँ तक याद है। कोई फ्लोट की लाइफ होता है, दिस डॉट एज, यहाँ भी एक /n रखेंगे ही ताकि अगले के लिए मिल पाए। हो गया हमारा सेटअप। तो अब देखो कितना आसान हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, शो डिटेल्स से यूजर वन शो डिटेल्स। कैसे? सब में तो हमने कुछ ना कुछ वैल्यू दी ही है। ओ यहाँ यार, यहाँ अंदर पीएसवीएम के अंदर, तो हमने यूजर वन शो डिटेल्स, यूजर टू शो डिटेल्स, यूजर थ्री, इतना वो लिखवा रहा है, यूजर थ्री डॉट शो डिटेल्स। ये हमने अपने से इम्प्रोवाइज किया है। क्या एक गड़बड़ है, ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेस दिया है इन्होंने, ये हटा देते हैं। ठीक है यार। username of this user is SpongeBob। और एक हम थोड़ा नीटनेस के लिए हम एक काम कर सकते हैं, जो लास्ट में एक /n एक्स्ट्रा दे देते हैं ताकि सेपरेशन थोड़ी ठीक ठीक से दिखे हमें। अब आएगा यूजर नेम ऑफ दिस यूजर इज SpongeBob, the username of this user is not provided, age of this user is, बोलते हैं, और ये P स्टार कर देता हूँ यार, P स्टार। ठीक है, रन करता हूँ मैं, सब सही चल रहा है यार। P स्टार एवल @aol.com, Stanley 6@gmail.com। काफी टाइम लगा दिया हमने। And these attributes: username, email, age. Let's set up a constructor that accepts no arguments. This will be kind of an anonymous profile. This.username will equal guest or guest profile. This.email equals not provided. This.age equals 0. Now we could create a user object, then pass in no arguments. User4 equals new user. This time we don't have any arguments. Then I'll display user4's attributes. Username, email, ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बोल रहा है जो खाली हो। दिस डॉट यूजर नेम हमें गेस्ट, दिस डॉट ईमेल इक्वल्स टू नॉट प्रोवाइडेड, दिस डॉट एज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे यूजर 4 कर सकते हैं, यूजर 4 इक्वल टू न्यू यूजर 4 डॉट शो डिटेल्स कर देता हूँ, यूजर 4। फिर क्या हो गया भाई, इतना मत सोच, 2 बार कर देते हैं, यूजर
3 और शो डिटेल्स, दो बार सेंड आएगी। हाँ, गेस्ट नॉट प्रोवाइडेड, और ये एज ऑफ दिस यूजर इज 0। सही है। Age. Here's what we got. Username guest. Email not provided. Age is 0. In a way, by creating an object and passing in no arguments, you can set up some default values. Alright, everybody, those are overloaded constructors. They allow a class to have multiple constructors. They just need different parameter lists. They enable objects to be initialized in various ways by passing in a varying amount of arguments. This would be great in a situation where some fields are optional when creating an object. And well, everybody, those are overloaded constructors in Java. Hey, where are you going? Just got a call from HR. I'm out. Said the company is downsizing. But HR is giving me 15 lakh per annum to stay on. How? We are both manual testers. That's the point. You stuck with manual testing, but I became a Python developer by learning Python using AI, building scalable solutions and solving real-world problems. Now they simply can't afford to lose me. I should have done the same. But Hey everybody, in this video I'm going to show you how we can create an array of objects using Java. It's pretty useful at times, and you should probably know how to do it. We'll begin by creating a new class. Let's go to File, New, Class. We will create a car class. Let's say that cars have the following attributes. We'll just pick two to keep it simple. A string of model and a string of color. We'll need a car constructor. We will pass in a string of model and a string of color. We will assign this.model equals the model we receive. This.color equals the color that we receive. We'll add one method. Void drive. All cars can drive. We'll output the following using a print line statement. You drive the plus this.color plus a space plus this.model. Okay, we are done with the car class. We'll construct a few car objects. Let's start with car1. Car1 equals a new car. We have to pass in a model and a color. Think of some cars that you like. I will pick a red Mustang for one car. Let's create car2. Car2 equals a new car. I will pick a Corvette. That is blue. One more car. Car3. Car3 equals a new car. A yellow Charger. Alright, we have our three car objects. We can create an array, but for an array you have to list the data type of what you're storing. We're going to be storing car objects. The data type of the array is going to be car objects, car. Then for an array we need a set of straight brackets. What is the name of this array going to be? Well, I think cars would be appropriate. Cars equals, if you're creating an empty array, you're going to use the new keyword, list the data type of car. Within straight brackets, specify the size of this array. Let's say 3 elements max. Or we could go ahead and just assign these right away too, using a set of curly braces. Let's place car1, car2, and car3 within this array. We'll place the car objects within this array of cars. Now you could use a for loop to iterate through this array. Here's how. We'll start with the standard for loop. We'll need an index, int I equals 0. We'll continue as long as I is less than our car's length property, then increment I by 1. We'll access our array of cars at index of I, which is going to increase each time, but it starts at 0. We will call the drive method. And let's see what happens. You drive the red Mustang, you drive the blue Corvette, you drive the yellow Charger. Now an enhanced for loop would probably be more appropriate for this. If you want to use an enhanced for loop, type for, parentheses, curly braces. What is the data type of each element within this array? Car objects. car. We'll need a nickname for each element within this array. In Let's cars. say colon, think of colon as in, then our array of cars. For every car object in our array of cars, do the following. We'll take each car object, call the drive method. And that's going to do the same thing. You drive the red Mustang, you drive the blue Corvette, you drive the yellow Charger. Another thing you can do too when creating an array of objects, you can pass in anonymous objects, rather than first instantiating the objects, then assigning them to the array. Here's how you can do that. For each element, we're going to call the car constructor with the new keyword, call the car constructor, then pass in the details for each car, the necessary arguments. We'll pass in our you drive the red Mustang, you drive the blue Corvette, you drive the yellow Charger. Another thing you can do too, ये बहुत complex you can pass in anonymous objects, rather than first instantiating the objects, then assigning them to the array. Here's how you can do that. For each element, we're going to call the car constructor with the new keyword, call the car constructor, then pass in the details for each car, the necessary arguments. We'll pass in our Mustang, that's red. That's the first element. I'll just copy it to save some time. Then we're creating a new car, but this will be a Corvette. That's blue. And I'll put each of these on a new line just for readability. And then we have our Charger. That's yellow. And this will do the same thing too. We have our three cars. Constructing a new object without giving the object a unique identifier, like car1, car2, or car3. These are known as anonymous objects. So within an array, you can create anonymous objects, if you would rather not give each of these cars a unique identifier. Another thing you can do too with an array of objects is let's change the color of each car using our enhanced for loop. Car.color. Let's change the color to be black for each car. We'll use another enhanced for loop to display each car. Car.drive. You drive the black Mustang, you drive the black Corvette, you drive the black Charger. Alright everybody, those are a few things you can do with an array of objects in Java. ये सिमिलर भाई मैं सिमिलर क्लास में करके आपको दिखा देता हूँ। ये जब हमने शो डिटेल्स करा है ना, देखो मैं user1 user2 user3 के लिए करता हूँ। मैं यूजर इक्वल्स टू user1, ये कह रहे हैं user1 user2 user3, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया, तो फिर फॉर यूजर्स, फॉर यूजर इन यूजर्स
किसी को याद नहीं आती भाई कभी। कोई नहीं यार, अब देखो कितना आसान हो जाएगा। 3 बार लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने हैं उतने हो जाएंगे। यूजर डॉट शो डिटेल्स, सेम काम होगा हमारा। वाह, रन भी करके देखेंगे ना। बहुत सही, मजेदार। लाजवाब। फोर। Hello, everybody. Today I'm going to explain the static keyword using Java. Static is a keyword. It modifies a variable or method ये so that it belongs important to the है। class rather than any specific object. We see the static keyword within the main method. When you modify a variable or method with a static keyword, static is used to create utility methods or other shared resources. Let me give you a ये नोट कर लेते हैं हम लोग। demonstration. We're going to create a new class. Let's go to File, New, Class. We'll create a friend class. We will create some friend अच्छा, फ्रेंड क्लास में, ठीक है ठीक है, उसी में डाल दूंगा मैं। ले भाई, यूज नहीं किया ना, कोई नहीं, ठीक है, नेक्स्ट को रख ही लेते हैं। चल 4। यार नहीं यार, जबरदस्ती क्यों रखना किसी को। फ्रेंड डॉट जावा, ठीक है। यहाँ इसमें लिखा है स्टैटिक का, मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ मैं। हाँ, स्टैटिक makes a variable or a method belong to the class. Class rather to any specific object commonly used for utility methods or shared resources. Commonly used for utility methods or shared resources. resources. Let me give you a demonstration. We're going to create a new class. Let's go to File, New, Class. We'll create a friend class. We will create some friend objects because you're lonely. Let's say that all friends will have a name attribute, string, name. We need a constructor. It's the same as the class name, parentheses, curly braces. When we construct a friend object, we have to pass in a string of name. We will assign this object's name attribute equal to the name parameter that we receive. Let's construct two friends. We'll say friend1 equals new friend. But we have to pass in a name. Pick a name. My default is SpongeBob, because most people know who SpongeBob is. If I was to output friend1's name, then it should be SpongeBob. We just want to be sure that it works. Yes, it does, SpongeBob. Now, going back to our friend class, let's say we would like to keep track of how many friend objects we create. Well, that could be an attribute. Let's say we have an integer of num of friends, meaning number of friends. Whenever we create a friend object, we will increment number of friends by 1. Num of friends plus Okay. plus. So going back, let's output friend1's number of friends attribute, num of friends. So this should be 1. Yep, num of friends is 1. We have one friend. But what if we create a second friend object? I'll just copy this line of code, paste it, change friend1 to friend2. We'll pass in a new name, let's say Patrick. We'll print friend1's number of friends, One, and yeah, friend2's I got- number of friends. How many friend objects have we created? We have created 2, but what's the output? Well, it's 1 for both. Here's why.
Each friend object has their own copy of the number of friends variable. We're incrementing each copy of number of friends by 1. When we create the object of friend 1, we're incrementing its attribute of number of friends by 1. Same thing applies with friend 2. When we create friend 2, friend 2's number of friends is 0, and we're incrementing it by 1. What if we would like to keep track of the total amount of friends that we created and store it within one variable? Well, there is a way we can do that, and that is with the static modifier. So going back to our friend class, we're going to precede the data type of this attribute with the static modifier. Static int number of friends. Rather than all objects, all friend objects, having their own copy of number of friends, they're all going to share 1. So going back, let's print a number of friends now. It's 2. We have 2 total friends. If I was to create a third friend, friend 3 will be Squidward, and then I'll output friend 3's number of friends. We have 3 total friends. We are receiving a suggestion. When accessing a static variable or calling a static method, it's actually best to do so through the class itself, rather than any object created from that class. Instead of saying, friend 1, then accessing the static member, we will instead use the name of the class, in this case, friend. It's better for clarity to access a static member by the name of the class itself rather than any object, because you and other developers will know that this is a static attribute or method. To display the static variable, we would want to access it by the class name, then access that static attribute. How many friends do we have now? 3. Let's create a fourth friend. Friend class itself rather than any object, because you and other developers will know that this is a static attribute or method. To display the static variable, we would want to access it by the class name, then access that static attribute. How many friends do we have now? 3. Let's create a fourth friend. Friend 4 will be Sandy. Then display the number of friends we have. Now we have 4 friends. Going back to the friend class, it's as if all these objects are sharing the same variable, but rather than any one object having ownership of this variable, rather the friend class owns it, and all objects have access to it. Methods can also be modified by the static keyword. We will create a static method that doesn't return anything, the return type is void. This method will be the showFriends method. We'll just output the following. We'll output you have plus. Normally when you access an attribute, you type this dot the name of the attribute, such as, name. If you're working with a static attribute, you don't need this. For example, this dot number of friends, you don't need this. We even have a warning here that friends.this cannot be referenced from a static context. If you're working with a static attribute, you don't need this. This refers to the object you're currently working with, but since this attribute belongs to the class, we don't need this. You have your static attribute of number of friends. Then the words total friends. सही है भाई। और भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। फ्रेंड क्लास बनाया ना, static int number of friends, a string name, यहाँ पे कोई बना लेते हैं मेथड static void show details, शो फ्रेंड्स है वो, ठीक है, शो फ्रेंड्स। तो कैमरा वाला ऐप बंद करते हैं क्योंकि वो चल ही रहा है पहले से, यहाँ देख लेंगे तो आप कैमरा वाला ऐप चल ही रहा है। चैट नहीं लगाई गई, चैट लगा देते हैं, थोड़ा सा फीलिंग आएगी स्ट्रीम वाली। ओ भाई, कोई नहीं, आपको अलग से दिख जाए, क्या फर्क पड़ रहा है अभी। वहां भी दिख जाएगा, वहां भी दिख जाएगा। हाँ, शो फ्रेंड्स। यू हैव यू हैव क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ फ्रेंड्स। अब ये एरर किस बात का आ रहा है, तो स्टैटिक नम ऑफ फ्रेंड्स है वो, फ्रेंड्स। यू हैव थ्री, यू हैव थ्री फ्रेंड्स, ठीक है, इतने आएगा। पार्वती बोली शंकर से ओ गाइस, हम लोग फ्रेंड की बात कर रहे थे। फ्रेंड, फ्रेंड वन, न्यू फ्रेंड स्पॉन्ज बॉब, फ्रेंड, फ्रेंड टू,
न्यू फ्रेंड पैट्रिक। ने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया क्या? कौन है? अरे नहीं यार। शिवम जरा दरवाजा लगा दो क्या? शिवम। शिवम। मैं सुन नहीं रहा। थोड़ी देर बाद मैं ही लगा दूंगा गाइस। तो फ्रेंड है, इसमें नेम पास हुआ हमारा, स्ट्रिंग नेम पास हो रहा है, कंस्ट्रक्टर बना दे रहा हूँ मैं। लिस्ट डॉट नेम इक्वल्स नेम। यहाँ मैं चेक करता हूँ कि मैं नंबर ऑफ फ्रेंड्स को दे सकता हूँ कुछ वैल्यू, 5 या 3 दे सकते हैं। Yes. लेकिन फिर ना गड़बड़ हो गई। एक बार ट्राई करते हैं, मैं इसको कुछ वैल्यू देता हूँ 100। मैंने 100 दी और फिर उसके बाद में चेक करता हूँ वैल्यू कितनी आती है। यहाँ मैंने कर दिया, यहाँ कर दिया। फ्रेंड फ्रेंड 3 इक्वल टू न्यू फ्रेंड सैंडी। तो अब मैं सिस आउट करूंगा नम ऑफ फ्रेंड्स को, लेकिन हम दो दो जगह बनाते हैं। ओ, समझ गया। एक हमने रखा है नंबर ऑफ फ्रेंड्स, 100 कर दिया है। अच्छा, फ्रेंड डॉट चला के देखता हूँ मैं। 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। सीधा ही 100 दे दिया, पूरी क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको प्लस प्लस करा, डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहती है, तो क्लास को बिलोंग कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। 3 आ रहा है। और यहाँ पे हमने घेरा फ्रेंड डॉट शो फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या होगा। You have 3 friends. Show friends. You have 3 friends. You have your static attribute of number of friends, then the words total friends. To call a static method, type the name of the class, in this case friend, dot the name of the method, show friends. You have 4 total friends. Let's create another friend, friend 5. Friend 5 will be Gary. Friends.showFriends. You have 5 total friends. 5 total friends. तो भाई अब क्या करना है, ये तो हो गया। Another place in which you see static members is through the math class. For example, let's say you would like to round a number. You would type the name of the math class, math.round, and you can round a number. Round is a utility method. We access it through the class name of math. You don't need to go ahead and create a math object such as math1 equals new math, and then access this object. That would be silly. Round is a static method. It behaves as a utility method. We can access it through the class name, and we don't need to create any math objects because that's stupid. And to prove this, let's go to the math class. I'm going to hover over math, jump to source,
Here's the math class, and let's find the round method. I'm going to do a search for it. Here's the round method. So round is a method, and we have that static keyword. Round is a utility method for the math class. We can access it through the name of the class. All right, everybody, so that is the static keyword. It modifies a variable or method so that it belongs to the class, rather than any specific object. It's commonly used for utility methods or shared resources among objects created from that class, such as the number of friends. All those friend objects share the same attribute, rather than each of them having their own copy. And well, everybody, that is the static keyword in Java. You know, when we talk about resumes, adding Microsoft Excel as a skill might land you a job with a 4 to 5 lakh per annum salary package. Sure. But if you replace Microsoft Excel with Power BI, suddenly that same resume could literally get you a salary of 24 lakh per annum and maybe even more. And I'll tell What is going on, people? Today we got a very important topic to discuss today, and that is inheritance. Inheritance is where one class inherits the attributes and methods from another class, much like how a child can inherit traits from a parent. Well, in programming, we can do something similar. One class, a child's class, can inherit traits from a parent. Here's an example. We're going to create a few classes, but we'll start with a new class of animal. Let's go to new, class. I will create an animal class. What do animals have? Let's say that all animals are alive. They will start by being alive. Is alive. Let's create a constructor of animal. I will set is alive to be true when we construct a new animal object. But not only are all animals alive, all animals can eat. They will have an eat method. Void eat. We'll print something like the following. The animal is eating. Easting. Eating. That is good enough for this class. So what we're going to do is create two more classes. File, new class. We will create a dog class. क्या किया इसमें भाई? So what we're going to do, the animal is eating. Easting. Eating. Eating. That is good enough for this class. So what we're going to do is create two more classes. File, new class. We will create a dog class and a cat class. Dogs and cats are types of animals. Our animal class will be the parent. The dog and cat class will be its children. In order for a class to inherit all the attributes and methods from another class, after the class name, you will use the extends keyword, then specify the parent class. Dog extends animal. Our dog class will inherit all these traits, these attributes and methods, from the animal class. The cat and dog class don't have anything within them. Let's see if they actually do have these attributes and methods, even though there's nothing within them. Let's create a dog object. Dog equals new dog, and a cat. Cat equals new cat. Let's print our dog's is alive variable. Is my dog alive? I sure hope so. Cat dot is alive. Look at that, they're both true. They should also be able to eat. Dog.eat method, cat.eat method. The animal is eating, the animal is eating. Even though these classes of dog and cat don't have anything within them, since they extend to the animal class, we're specifying that the animal class is the parent. The cat and dog classes are the children of the animal class. They inherit all these attributes and methods from its parent of animal, even though they don't have anything within them. This isn't as useful if you only have a few classes, such as two, because, you could just copy and paste all this code within each, and then just change the constructor. But imagine if you had hundreds of classes, hundreds of children. You'd have to do that for hundreds of classes. But not only that, if you have to make any changes to say, this animal is eating, you'd have to make that change for hundreds of classes. And we are repeating ourselves a lot. It'd be a lot easier if we could just make that change in one place. If we have to change the to this, all of the children classes will inherit this updated method. We're following the dry principle. Don't repeat yourself. We're writing the code once and just reusing it. All the children classes will inherit this updated method. But not only that, each child class can have their own unique attributes and methods too. Let's say that all dogs will have one life. Int lives equals 1. They will also have their own unique speak method. Void speak. When our dog uses the speak method, let's output the following. Let's say the dog goes woof. Then within the cat class, cats will have 9 lives. And they can speak, but they will say something different when they speak. Let's output the cat goes meow. Going back, let's output our dog object's lives. How many lives does our dog have? Same thing applies with our cat. Cat.lives. Our dog has 1 life, our cat has 9 lives. They also have their own unique speak methods. Dog.speak, cat.speak. The dog goes woof, the cat goes meow. अभी तक इतना हम कॉपी कर लेते हैं गाइस, वरना फिर वो हमारा हाथ पीछे रह जाएगा। मैं एक नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट्स प्लस नो बिल्ड टूल्स। मैं कहाँ जावा ब्रो लाइव में बनाऊंगा। सेलेक्ट द प्रोजेक्ट लोकेशन, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम एनिमल, ठीक है, एनिमल बन गया। ये इसको बंद कर, ताकि थोड़ा मतलब मैसी ना हो जाए, वो खिचड़ी ना बन जाए एक जगह। तो ऐप डॉट जावा है, तो मैं एनिमल डॉट जावा बनाऊंगा। 2 बार जूम कर दिया था काफी। तो यहाँ पे क्या था, बूलियन is alive equals true, void eat sys out the animal is eating.
और क्या था एनिमल क्लास में? एनिमल इज अ लाइव फिर कंस्ट्रक्टर है। यहाँ बस हम लोग तुरंत नहीं दे देंगे वैल्यू। एनिमल डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी फिर हमारी वो इज अलाइव इक्वल्स ट्रू। सही है, इज अलाइव हमारा ट्रू हो गया। अरे इस गाइस ये लास्ट लास्ट के पार्ट में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि दीज आर कॉम्प्लेक्स थिंग्स। अब इनहेरिटेंस आ गई है, ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें अब आ गई हैं, इसमें टाइम लगेगा ही। उफ, 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 उफ। अभी आएगा सुपर कंस्ट्रक्टर, वो सब आएंगे, मजा आएगा। दोज आर रियल कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। अब मैं अगर और क्लास बनाऊंगा, मैंने बनाया डॉग डॉट जावा, मैंने बनाया कैट डॉट जावा। नाउ एक्सटेंड्स एनिमल। इसको मैं रीनेम कर दे रहा हूँ, रीनेम कैट। रीनेम डॉग। कैट एक्सटेंड्स एनिमल। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐप डॉट जावा में जाएंगे, डॉग डॉग equals new dog cat cat equals to new dog new cat। एक एनिमल में हम बना देते हैं फंक्शन void show animal properties। नहीं, इतने के लिए क्या बनना है यार, वो तो लिखना ही पड़ेगा यार, इतने के लिए मत करो। तो डॉग से यहाँ पे आ गए ऐप डॉट जावा पे, तो डॉग डॉट सिस आउट, डॉग डॉट इज अलाइव सिस आउट सिस आउट सिस आउट। ये कैट डॉट इज अलाइव है ना, क्यों गलत क्यों हो रहा है? इज अलाइव कैट ने एक्सटेंड नहीं किया, कैट ने भी तो एक्सटेंड किया है। एनिमल इज अलाइव इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ डॉग था, यहाँ कैट थी। अबे यार एक और बनाना पड़ेगा लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ गलती क्या हो रही है? फिर कैट डॉट कैट्स, लेट्स मेक इट कैट्स। वाओ, लिटरली मैन, लिटरली।
dog equals new dog, cat equals new dog. Public class dog extends animal. ये भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा यार. cat dot आ गया. Quick fix. Cat is एक्सटेंड करिए ना एनिमल को भाई. अरे भाई इसको उड़ाओ. इस भोसड़ी वाले को उड़ाओ. रीनेम नहीं भाई, डिलीट वर्ड डिलीट करना है. बेसिक सी चीज है यार फिर भी. दोबारा करो. cat डॉट जावा. क्या हो रहा है? स्टैंड्स. व्हाट द फक हो रहा है यार यहाँ पे. VS कोड. इसको हटाओ. इसको भी हटाओ. ये भी अलग ही आदमी है भाई. डॉग में भी यही हुआ है. अब मैं लिखूं कैट. कैट इक्वल्स टू न्यू कैट. फिर मैं लिखूं सिस आउट. कैट डॉट इज अलाइव. अब आ रहा है. पता नहीं क्या हो रहा था. क्लास में बनने में कुछ गड़बड़ होगी. डॉग डॉट इज डॉग ईट. कैट कैट डॉट ईट. अब चला के देखते हैं. ट्रू ट्रू द एनिमल इज ईटिंग. द एनिमल इज ईटिंग. तो अब हम लोग ने just change the constructor. But imagine if you had hundreds of classes, hundreds of children. You'd have to do that for hundreds of classes. But not only that, if you have to make any changes to say, this animal is eating, you'd have to make that change for hundreds of classes. And we are repeating ourselves a lot. It'd be a lot easier if we could just make that change in one place. If we have to change the to this, all of the children classes will inherit this updated method. We're following the dry principle. Don't repeat yourself. We're writing the code once and just reusing it. All the children classes will inherit this updated method. But not only that, each child class can have their own unique attributes and methods too. Let's say that all dogs will have one life. Int
lives equals 1. They will also have their own unique speak method, void speak. When our dog uses the speak method, let's output the following. Let's say the dog goes woof. Then within the cat class, cats will have 9 lives. And they can speak, but they will say something different when they speak. Let's output the cat goes meow. Going back, let's output cats will have 9 lives. And they can speak, but they will say something different when they speak. डिफॉल्ट Let's वैल्यू output दे दी। the cat goes meow. इन लोग के अपने भी हो सकते हैं। int lives equals to 9 sys void speak so cat goes meow 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 int lives equals to 1 ये meow कुत्ते की जिंदगी एक ही होती है और कैट्स तो कैट ही होती हैं। साउथ wow I'm literally not getting this out. Sys void speak what the fuck happened man कभी इन ये सजेस्ट ही नहीं हुआ था like literally the Java suggested went off। नहीं आपको लग रहा है कि मैं इसके बिना लिख नहीं सकता, अगर ऐसा लग रहा है तो अभी आप लोगों को बता दिया जाए मैं सब लिख सकता हूँ। The dog goes woof। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। sys sys out dog dot lives फंक्शन बना सकते हैं लेकिन यार क्या क्या भाई अरे हर बार का हो गया यार। ये सारा आ ही नहीं रहा है ये पकड़ ही नहीं पा रहा है यार। अब देखता हूँ मैं डॉग डॉट लाइव्स आ ही नहीं रहा। अरे मुझे बार बार बनाने पड़ेगी क्या क्लास? कितना इरिटेटिंग है भाई। डॉग की तो अपने मेथड है। ये भी देखो कितनी ज्यादा दिक्कत है। डॉग डॉट इज अलाइव आ रहा है, ईट आ रहा है, लिव्स डॉट डॉट लाइव्स कितने। अबे यार अबे जो यार मतलब कुछ भी हो रहा है यार। विजुअल स्टूडियो कोड पागल है भाई। मैं अभी चला दे रहा हूँ सिस आउट, मतलब दोबारा खोलूंगा मैं कैट डॉट लाइव्स। स्पीक मेथड भी नहीं आ रहा है यार। डॉग डॉट स्पीक है ना, कैट डॉट स्पीक कैट में आ रहा है, डॉग में नहीं आ रहा भाई। क्या चुतिया बनती है यार। कैट में लाई सारी डॉग डॉग बहन चो। क्या हो रहा है यार भाई। दोबारा खोल रहा हूँ अभी जो स्टूडियो कोड, ये चूतिया हो गया यार।
हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है यार। जो मुझे नहीं चाहिए मेरा, चलना चाहिए यार, बिल्कुल। 19 वूफ म्याऊं। आ, बढ़िया, बढ़िया भाई, बढ़िया। Nice. So we have Going back, this. let's output our dog object's lives. How many lives does our dog have? Same thing applies with our cat. Cat.lives. Our dog has 1 life, our cat has 9 lives. They also have their own unique speak methods. Dog.speak, cat.speak. The dog goes woof, the cat goes meow. There's also the concept of multi-level inheritance. We'll create a new class to serve as a sort of grandparent. A child class will inherit from a Okay. parent. A parent will inherit from a grandparent. So let's change this program around a little bit. We're going to create a new class. File, new, Java class. We will create a class of organism. Organism. Animals will Okay. extends the organism class. Organism. Let's cut our isAlive variable and a constructor. If you inherit from the animal class, you will get an eat method. If you inherit from the organism class, you are alive, and that's it. But we need to change the constructor. Animal वाह, inherits from ये बढ़िया बताया इसने। साइंटिफिक लगे भाई, बायोलॉजी। ऑर्गेनिज्म, एनिमल, कैट, डॉग, कैट। मस्त पिक्चर इसकी। ऑर्गेनिज्म, एनिमल, डॉग, कैट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक और क्लास बना देनी है, ऑर्गेनिज्म डॉट जावा। ये हमारी जैब नहीं यार, ऑर्गेनिज्म और जावा। अब एनिमल हमारा एक्सटेंड करेगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ से ये हटा देता हूँ। एरर आएंगे, पता है एरर आने वाले हैं। ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, बूलियन इज अलाइव। और जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म बनाया आपने, तो हमें इज अलाइव को हम लोग ट्रू कर देंगे। वाह, सारा चलेगा वो। ठीक है, एनिमल से ईट मिलेगा। बढ़िया। वाह, वाह। organism. Dog and cat inherit from the animal class. So from the perspective of our dog and cat class, the organism class is, you could say, a grandparent. Going back to our main Java file, let's take a look at our isAlive variables. Dog.isAlive. Same thing with our cat. Cat.isAlive. Yes, सब our dog is चलेगा alive भाई। and our cat is alive. Let's take this a step further. Let's create a class of plant. Plant is going to inherit from the organism class because plants are a type of organism, but they're not related to animals. Let's create a new
class. अब रिपीट Plant. कर रहा है अपने आप को, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ Let's ब्रो। say that if you're a plant, you get a method to, well, plants don't eat, but they can photosynthesize. Photosynthesize, I think I spelled that right. बहुत Probably रिपीट है, not, अब but who इतना cares? रिपीट नहीं करेंगे। If you're a plant and you photosynthesize, then the plant absorbs sunlight. Hey, this is Bro from the future. I forgot to extend the organism class, so let's take care of that. Heading back to our main Java file, let's create a plant object. Plant equals new plant. Our plant object should have an isAlive attribute, is alive, which it inherits from the organism class. That's true. And plants can photosynthesize. Plant.photosynthesize. The plant absorbs sunlight. It's kind of like we have a whole family tree. Dog and cat inherit from animal, animal inherits from organism, and plant inherits from organism. But animals and plants aren't related. They're siblings, ठीक but है। they're not the same. Going back to our main Java file, let's see if our dog has a photosynthesize method. Dog.photosynthesize. Looks like they can't. We do not have a photosynthesize method for dogs. They do not inherit this method because they're not related to plants. Alright, everybody, so that's inheritance. It's where one class inherits the attributes and methods from another class. A child class will inherit all the attributes and methods from a parent class. Parents can also be considered children too, and inherit from a, let's say, grandparent class. You just have to use the extends keyword. And well, everybody, that's inheritance in Java. Understanding data structures and algorithms is difficult. Don't worry, Log2Base2 can help you. With our animation videos, you can start visualizing the data structures and algorithm concepts. Build the algorithm, and learn how to analyze the time and space complexity of it. And also, you can understand complex topics like binary recursion, heap, graph traversals, dynamic programming, greedy, divide and conquer, etc. Once you master data structures and algorithms, you can learn how to solve famous interview problems in pattern-wise, such as problems using sliding window pattern, two pointers pattern, fast and slow pointers, cyclic sort. विजिट करके देखते हैं, सही तो लग रही है ऐसे। Log2Base2 ज्वाइन फॉर फ्री। ठीक है, आता हूँ कुछ देर बाद इस पे। Yo, so let's get started. Today I gotta discuss the super keyword. Super just refers to the parent class when using inheritance. A child class. टाइम देखते पहले गाइस, टाइम हो गया 1:25, हमारे खाने का टाइम हो गया। हल्का सा ब्रेक लेंगे अपन, फिर सुपर पे आते हैं। आधे घंटे की ही हो पाई, 1 घंटे का तो स्ट्रीम हो गया होगा, इसमें कितना आधे घंटे का ही हो पाया। इस बार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन टॉपिक भी कॉम्प्लेक्स है ना, आप समझो। चलिए चलिए मैं चलता हूँ। ओके।
तो गाइस हम वापस आ चुके हैं अपने लाइफ पे। हम सुपर स्टार्ट करने वाले थे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना। बात फिर ठीक कर लो। हाँ, लेट्स स्टार्ट। तो करते हैं। Method overriding. Method overriding तो पहले ये लिख लेते कहीं पे, क्योंकि क्लास बनाएगा तब लिखेंगे। is a whole other topic that we'll discuss. We're more focused on constructors in this topic. We use the super keyword to call the parent constructor to initialize attributes. Let me give you an example. We'll be creating a few different classes. Let's go to File, New, Class. We will begin by creating a class. पर्सन, अच्छा पर्सन, ओके। सो मैं एक नया प्रोजेक्ट ही बनाऊंगा। No build tools. So here I will go to Java Bro Life and I will name it person. इसको बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बनाऊंगा person डॉट जावा। दो बड़े कर देते हैं, इसको 2 बार बड़ा कर दिया, अब सही से दिखेगा। Of person. Person will be the parent, the superclass. Let's say that any person object has the following attributes. They will have a string of first, meaning first name, then string last, meaning last name. We'll need a constructor. It's going to be the same as the class name, person, parentheses, curly braces. When we construct a person object, we will need to pass in the following arguments. A string for first name, first, and a string for last name, last. This object's first name attribute, this.first, equals the argument that we receive for first. Same thing applies with last. This.last equals the argument we receive for last. And then we'll create one method in this demonstration. This method won't return anything. We will name the method showName. All we'll do is output the following. This.first plus a space plus this.last. Okay, let's test this class out. Person equals new person. String last person। पहले तो इसको चेंज कर दें गाइस, हम लोग रीनेम कर देते हैं कैपिटल पर्सन, ठीक है। सॉरी, पर्सन हो गया, फर्स्ट स्ट्रिंग लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम बस क्या करना है, सिंपली दिस डॉट फर्स्ट इक्वल्स फर्स्ट, दिस डॉट लास्ट इक्वल्स लास्ट, ठीक है। यही करना है। कंस्ट्रक्टर हमारा इनिशियलाइज हो गया और एक फंक्शन बनाया था void show name, void show name। ये कुछ नहीं करेगा, sys out। तो sys out काम क्यों नहीं कर रहा, नहीं काम कर रहा ना यार, बहुत टाइम से काम नहीं कर रहा। dot out dot println first plus लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ये हमारी क्लास बन गई। इसको चेकआउट करेंगे, देखें कैसे। But we do have to pass in a first and last name. I've already used SpongeBob for too many examples, so let's mix it up. This time I'll pick Harry Potter, or feel free to pick a different franchise that you like. So one person from Harry Potter is Tom Riddle. We have a person object with this first name and this last name. First, last. Our person is going to have a show name method. Show name. Then call it. There we go. There's our person object's first and last name, Tom Riddle. Our person class will be the parent class. We'll create a few other classes to inherit from this person class. We're going to create a class of student that's going to inherit from the person class. The student class will inherit these attributes and methods. Let's create a new class of student. Student will extends the parent or superclass of person. Since student is inheriting from person, student is going to have a first and last name already, and a show name method. What other attributes does a student have that a person might not? Well, students have a GPA, a grade point average. We'll declare that as an attribute, double GPA. We're going to create a student constructor. Let's say that when we create a student, we need to pass in a string for first name, string first, string last, and double GPA. What's their grade point average? We're assigning our first and last name within this constructor, such as this.first equals first, this.last equals last,
and this.gpa equals GPA, we are receiving a warning. There is no parameterless constructor available in person. We're not able to assign these attributes of first and last within the constructor for student. This is because student inherits from the person class. Since the constructor of our parent requires a first and last name, we have to pass these arguments to its parent of person. How we can do that, going back to the child class, we're going to be using the super keyword. Any arguments that the parent requires, we have to send the parent these arguments from the child constructor. And how we can do that is use the super keyword, and then pass in those arguments of first and last. And now Java is happy. Super just refers to the parent. Imagine that we replace the super keyword with person. Think of it like that. And now this should work. Going back to our main file, we should be able to create a student object. Student equals new student. We have to pass in a first name. First name will be Harry. Last name will be Potter. Then we have to pass in a GPA because our student constructor requires it. Harry Potter has a 3.25 GPA, let's say. Our student object should have these attributes, this method, and this attribute from the student class of GPA. Let's test it. Student.showName. इतने तक हम लोग लिख लेते हैं गाइस, वरना पीछे हो जाएंगे इसमें। src जल्दी से student डॉट जावा डबल GPA, ठीक है, और स्टूडेंट ये होगा स्ट्रिंग फर्स्ट, स्ट्रिंग लास्ट और डबल GPA सुपर फर्स्ट लास्ट। लेकिन किसको एक्सटेंड कर रहा है? एक्सटेंड्स पर्सन। अब हो जाएगा ठीक। और फिर दिस डॉट GPA इक्वल्स GPA, तो ये हमारा इनिशियलाइज हो गया। सिंपल यहाँ जाके हमें कर देना है, इसमें से हटा देना है ये स्टूडेंट स्टूडेंट 1 इक्वल्स न्यू स्टूडेंट हैरी पॉटर 3.25 पर्सन ही बना देते हैं। पर्सन 1 is equal to new person Tom Riddle. Person 1 dot show name student 1 dot show name Tom Riddle Harry Potter, ठीक। The student's name is Harry Potter, and they should have a GPA. Let's print student's GPA attribute. 3.25. ठीक। But not only that, let's create a method to display their GPA. Within the student class, we will create a method that doesn't return anything. It will be show GPA. We will output the following. बस Let's say this dot first plus a string apostrophe s. So Harry's GPA is plus this dot GPA. अच्छा ठीक। void show GPA, this is how काम कर गया यार। सेट आउट अभी पता नहीं क्या चल रहा था। हाँ, this dot first plus this GPA is this dot GPA। तो हम लोग यहाँ से student 1 dot GPA dot show GPA कर देंगे। Harry's GPA is 3.25।
सही है। Let's take our student object, call the show GPA method that we have declared. Harry's GPA is 3.25. Let's create one more class. We will create an employee class. Class, employee. Employee will inherit from the person class. Employee extends person. Since employees aren't studying, they're not students, they instead get a salary. We will create an integer attribute of salary. And then ठीक है, that is ये going to be for रिपीट हो activity. रहा है स्टफ, ये रिपीट हो रहा है All employees फिर will से require the सुपर। following arguments: a string for first name, string first, a string for last name, string last, and an integer for our employee's salary. I will attempt to assign these attributes for our employee. Again, it's not going to work, but let's try it. This dot first equals first. This dot last equals last. This dot salary equals salary. Again, we're receiving that warning. There is no parameterless constructor available in person. Since employee extends person, and our person constructor requires a first name and last name, we have to send our person constructor these arguments first and last. So again, going back to our employee class, we will call the constructor of our parent using the super keyword, and then passing in those arguments, first and last. Let's create a method within our employee class, void show salary. Let's output the following. We'll say this dot first, this person's first name, apostrophe s. We'll create the employee एक grid. सैलरी, Is pick unit of इसकी currency equal to कमाई $100 कितनी है गाइस? plus this dot salary. Now we'll need to इसकी construct an employee कमाई object. है Employee equals new employee. We have to pass in a first name, a last name, and a salary in order to construct an employee object. We're going to pick Hagrid. Hagrid's first name is actually Rubius. Last name, Hagrid. Hagrid. Hagrid's salary will be $50,000, let's say. All right, let's take our employee, call its show salary method. And there we go. Rubius, also known as Hagrid, Rubius' salary is $50,000. In 50,000. conclusion, super refers to the parent class. Student and employee inherit from person. Since the constructor of the parent of person requires a first name and a last name, and each अरे हाँ, हमने डेफिनेशन लिखना भूल student गए and ना। employee inherit as Hagrid, Rubius' salary is $50,000. In conclusion, पर्सन पे super equals refers to the parent class, subclass, superclass। अच्छा ठीक है। the parent class, subclass, superclass। ठीक है, यहाँ पे आ गया। used in constructors and method overriding, used in constructors and method overriding, cause the parent constructor to initialize attributes, cause the parent constructor to initialize attributes। super refers to the parent class. Student and employee inherit from person. Since the constructor of the parent of person requires a first name and a last name, any children objects that we create, we have to call the constructor of the parent and pass in those arguments to satisfy Java. If the parent didn't require these arguments, then you wouldn't need to. And well, everybody, that is the super keyword in Java. What's going on, people? Today I'm going to discuss method overriding using Java. Method overriding is when a subclass provides its own implementation of a method, rather than use one that's inherited from a parent. It allows for code reusability, and you can give specific implementations of a method. Let me give you a demonstration. We'll be creating a few classes. File, अब मेथड ओवरराइडिंग होगा। new, class. We will begin by creating a एनिमल, class of animal. एमिनल कर देता हूँ मैं इस बार।
नया जावा प्रोजेक्ट लेते हैं, उसकी लोकेशन, रुकिए, नया जावा प्रोजेक्ट, नो बिल्ड टूल्स, इसकी लोकेशन मैं लूंगा जावा प्रो लाइफ, एक नो बिल्ड टू सेलेक्ट था ना, हाँ, इसकी लोकेशन ले लेते हैं हम लोग, जावा ब्राई लाइफ, इसको एमिनल नाम देते हैं, एमिनल, ठीक है। इसमें और जो पिछली वाली है क्लास, इसको बंद करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनिमल डॉट जावा, है वो आया नहीं, क्लास वो आना चाहिए, पब्लिक क्लास, एनिमल डॉट जावा, हाँ आ गया। अब तो बड़ा कर दिया 2 बार हमने, अब सही लग रहा है। Is when a subclass provides its own implementation of a method. एक मल्टी लाइन कमेंट डाल देते हैं मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। मेथड ओवरराइडिंग क्या कहते हैं गाइस? मेथड ओवरराइडिंग है when a subclass provides its own implementation of a method that is already defined rather than allows for code reusability. And give specific implementations. ठीक है। अब देखते हैं। Rather than use one that's inherited from the parent, it allows for code reusability, and you can give specific implementations of a method. Let me give you a demonstration. We'll be creating a few classes. File, new, class. We will begin by creating a class of animal, then a new class of dog, a class of cat, then अच्छा finally a class of fish. Dog, cat, and fish are अच्छा ठीक है, डॉग कैटफिश, डॉग डॉट जावा, cat dot java, fish dot java। तो यहाँ पे हमने बना दिया है अपना सब कुछ। इधर चार्जर हटा सकते हैं, थोड़ा सा बस थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। हाँ अब ठीक लग रहा है, मैं सिर क्यों अजीब लग रहा है। going to extend the animal class. After the class name type extends animal. So let's do this with cat and fish. The dog, cat, and fish classes are all children of the animal class. Animal class is the parent class. There's not a lot we have to write with this example. If a child class inherits from the animal parent class, they will inherit a method to move. Let's define a method of move. सब इनहेरिट करना है एनिमल क्लास को। डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, कैट एक्सटेंड्स एनिमल, फिश एक्सटेंड्स एनिमल। ठीक है, तो बढ़िया। All we'll say is this animal is running. We can keep the dog, cat, and fish classes empty for now. So going back to our main Java file, let's construct a dog object. Dog equals new dog.
a cat object, cat equals new cat, and a fish, fish equals new fish. All three of these animal objects, dog, cat, and fish, should have a move method. Let's take our dog, call its move method. Same thing with the cat and the fish. Cat.move method, fish.move method. Currently, when we run this program, we get the following output. ये तो हम लेकिन गाइस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कर देते हैं, कहीं काम आएगा ना, इसलिए. This is how the animal is moving. यहाँ ऐप डॉट जावा खोल लेते हैं, ये हटा देते हैं. dog 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 equals new dog, cat equals new cat, fish equals new fish. सही है यहाँ तो. fish to me fish, ये भी सही हो गया. dog dot move, cat dot move, fish dot move. The animal is moving, the animal is moving, the animal is moving. Our dog is running, our cat is running, and our fish is running, but fish don't have legs though, they can only swim. The move method that the fish class inherits isn't appropriate for that class. This animal is swimming would be more appropriate. So why don't we do this? Within the fish class, why don't we do some method overriding? Specifically for the fish class, we will create a unique move method only for this class. We will define a new move method, where we will say, this animal is swimming. However, it is good practice to add this annotation of at override so that you and other developers know that this method is being overridden. Our fish class does inherit a move method from its parent of animal. If you have the same named method defined in a child class, you'll use that one first. It has precedence. Going back to our main job file, अच्छा, let's call the move method. चाइल्ड क्लास वाला मेथड गाइस ओवरराइड में पेरेंट को ओवरराइड कर देता है, उसको सबसिड, मतलब उसको ढक देता है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि चाइल्ड वाला चलेगा अगर चाइल्ड में डिफाइंड है तो. For our fish. तो हम कैट में जाके हम लोग लिख सकते हैं दिस एनिमल इज स्विमिंग, वहां लिख देते हैं ओवरराइड. यहाँ पे लिखा है indicates that a method declaration is intended to override a method declaration in a super type. सही है, यानी सुपर क्लास और सब क्लास पेरेंट चाइल्ड है ना, सुपर क्लास सब क्लास यही है. Our dog is running, our cat is running, but our fish is swimming. Within the fish class, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर ऐप चलाएंगे तो, वाह, हाँ, animal is moving, the fish is, कैट में जाके कर दिया, चूंकि या फिश में करना था, कैट में जाके स्विम करा दिया कैट को, मतलब कैट को तेरवा दिया भाई पानी में तुम. इसी बात पे गाइस हम एक इंटरेस्ट पे जाके इमेज देखते हैं, मजा आएगा. नहीं, यहीं पे मिल जाएगा गूगल में, कैट स्विमिंग, मूवमेंट हो गया गाइस, मूवमेंट है गाइस. एक तो खोल नहीं रहा भाई. ये भी भाई अदब ही गजब. बस शेर
पैर भाई, खतरनाक शेर भाई। 1 मिनट गाइस, एक ब्रेक, मुझे इचिंग हो रही है थोड़ा। तो वापस आ चुके गाइस, हल्की सी इचिंग हो गई थी, अब चल जाना चाहिए। एंड दिस एनिमल इज स्विमिंग, फिश स्विम कर रही है। We have overridden the move method. We have given a specific implementation for this method just for this one class. The cat and dog classes will use what's inherited from their parent. Not only is it good practice to add this annotation of add override, but let's say that you misspell this overwritten method. Rather than move, let's say moves, even though it should be move. We're receiving a warning that this method does not override the method from its superclass, its parent. If you didn't have अच्छा करके देखते हैं यार, क्या उससे पता चल जाता है कि सही में ओवरराइड हो रहा है कि नहीं। Oops. ओह, उसको ओवरराइड करना ये बता रहा है। सही है, जब भी ओवरराइड डाल दिया तो ओवरराइड करवा के ही रहेगा। this annotation, you may not notice that you misspelled this method and you're not actually overriding it. हाँ, Adding the at override annotation provides a system of checks and balances when overriding a method. This error will go away once we actually are overriding a method. Alright everybody, so that is method overriding. It's when a subclass provides its own implementation of a method, rather than use one that's already defined. It allows for code reusability, and you can give specific implementations of a method. We'll be seeing method overriding again with the toString method coming up in a future topic. And well everybody, that is method overriding in Java. Practice communication for just 15 minutes a day for the next 30 days, and you will see a remarkable shift in the way you communicate. Now, where, what, and how to practice in these 15 minutes? I'll share inside this 2-hour masterclass. Sign up right away, and I'll see you inside. You'll also receive a free ebook when you sign up right now. अब सारा इन लोगों का काम ही क्या है, बहन जो किताब Hello everybody, ऐसे इन लोगों की स्किल है, वो लोग बात करते हैं, लेकिन काम ही क्या है। Create an object. Behind the scenes, the object class is a superclass. The toString method is used to return a string representation of an object if you were to output it directly using system.out.println. The default behavior of the toString method is that it returns a hash code as a unique identifier for that object, but it can be overridden to provide meaningful details, which is why we learned about method overriding in the last video. In this demonstration, let's create a new class. File, new, class. We will create अच्छा ठीक, यानी ट्रू स्ट्रिंग ओवररिडन हो सकता है, ये नोट डाउन करने की a car class. जरूरत Let's say that all cars नहीं should है। have the following attributes. A string of make, who manufactures the car. A string of model, what's the model of the car. Int, year for the year. And string, color for the color. We'll need a constructor, and then we'll assign these attributes. We have a string of make, a string of model, an int of year, and a string of color. Then we'll assign these attributes. This dot make equals make. This dot model equals model. This dot year equals year. This dot color equals color. That looks good enough for now. Going back to our main Java file, we'll construct a car object. Car equals new car. But we have to pass in the details for our car constructor. Our car constructor requires a make, a model, a year, and a color. So pick a car that you like. I like Ford Mustangs. I'll pick a Ford Mustang. The make will be Ford. Model will be Mustang. I need a year, 2025, and a color. I'll pick the color red. Car is an object. If I were to output my car object directly using system.out.println, here's what you'll see. If you output your car directly, technically you'll be given a hash code, a unique identifier for that car object. Hashing is kind of an advanced topic that I don't want to introduce right now, but typically with hashing, it's a unique identifier that uses the object's memory address to calculate a hash. You don't need to know any more than that right now. But wouldn't it be useful if we were to print our car object directly? We were given the details of the car. Normally what we would have to do is output something like this. This is if we wanted to output the details of the car. We could say something such as car.color, that would be first, plus a space character, plus car. Which would be next. Let's say the year. Color, year, then make and model. Car.make, plus a space, plus car.model. This print line statement is giving us meaningful details of this car object. This is the output. Red 2025 Ford Mustang. It would be nice if we were to print our car object directly using print or print line. We could be given these details instead. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज करेगा। We will be नहीं यहाँ से overriding the at override annotation. We do need this keyword of public. This is a publicly accessible method. The return type is string. The name of the method is toString. Everything within this print line statement, we're going to cut and delete this print line statement. Going to our car class within the toString method, we have to return a string because we set the return type to be a string. We promised that we would return a string. Let's paste all the details of that car. We'll need to replace car with this.
This refers to the object we're currently working with. Then add a semicolon to the end. If we were to print our car object directly using this print line statement, or a print statement, or even printf, instead of that hash code, we're instead given meaningful details of that car that we've customized, the car's color, year, make, and model. We have overridden the toString method that's normally available to all objects. Let's construct another car object. Let's rename car as car1. We'll have car2 equals new car. Pick some different details for a car. I will pick a Chevrolet Corvette. The year will be 2026, and the color will be blue. I'll print car1, then print car2. Here's car1 and car2. Car2 is a blue 2026 Chevrolet Corvette. All right, everybody, so that is the toString method. Objects inherit from the object class. The object class does have a toString method, but it can be overridden so that when you print an object directly, you can display meaningful details, such as the details of that object, instead of displaying a hash code. If you चलिए हम अपने ही क्लास में कर देंगे टू स्ट्रिंग को डेमोन्स्ट्रेट। देखो कैसे होगा। यहाँ पे ना क्या क्या डॉग कैटफिश ये सब हो रखा है। हम वो कार वाली प्रोजेक्ट खोलते हैं, फाइल न्यू विंडो। यहाँ हम ओपन कर देंगे जो कार वाला था। क्यों बार बार सेम चीज बनानी जो पहले से बनी हुई है, इतनी मेहनत क्यों करनी। जाओ कार खोलो, खत्म। अब इसने बताया है गाइस यहाँ पे कि जो कार है फ्रेंड फ्रेंड में ही चला जाते, फ्रेंड में ज्यादा कुछ नहीं था शायद, इन फ्रेंड में कार लेते हैं, ठीक है कार लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी के नीचे बना लेता हूँ कार कार इक्वल्स न्यू कार। इज दैट फाइन? अब मैं सिस आउट करूँ कार को तो क्या आना चाहिए देखते हैं। साउंड करूंगा कार को तो नीचे आ रहा है कार @ सब में हैश एड्रेस आ रहा है, तो उसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, लेकिन रेफरेंस एड्रेस, लेकिन जो रेफरेंस एड्रेस है वो आ रहा है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ यहाँ पे कि ये हमें नहीं चाहिए, तो हमें ओवरराइट करना है कार में टू स्ट्रिंग मेथड को जो ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है ऑब्जेक्ट क्लास में। तो वो कैसे हम करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास सबकी पेरेंट क्लास है, उसको ओवरराइट करना है। पहले तो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड, तो हमें पब्लिक ही रखना पड़ेगा, पब्लिक। अब ठीक है, सॉरी पब्लिक पी। हाँ अब हाँ मेथड वाज रिटर्न, और हम यहाँ पे लिख देते ओवरराइट ओवरराइट, ठीक है। फिर हम लिख देते हैं ओवरराइट। तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये मेक प्लस मॉडल प्लस ईयर प्लस, और इन सबके बीच में एक स्पेस भी जाना चाहिए, मेक प्लस मॉडल प्लस ईयर प्लस प्राइस प्लस is running is running। क्या दिक्कत हो गई इस रनिंग में? पहले तो इसको क्लोज करो, हाँ, और इसको थोड़ा सा इधर लाओ, नहीं इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इज रनिंग एंड अच्छा 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 अच्छा, यहाँ अब ठीक है। हाँ एंटर दबाएंगे तो फिर भी चल जाएगा, करनी ठीक है। दोबारा से देखते हैं चला क्या है। Ford Mustang 2025 58,199 फॉल्स। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर शायद यूज हुआ होगा कार का, जिसने डिफॉल्ट वैल्यूज कंस्ट्रक्टर यूज हुआ होगा, लेकिन इसमें कोई वैल्यूज नहीं दी होगी, लेकिन इस पहले से डिफॉल्ट वैल्यूज कुछ कुछ मिली हुई है डिफॉल्ट जो वैल्यूज, तो वो यूज हो गई। तो हमारा वैसे प्रिंट हो गया, काम हो गया हमारा। were to print the object,
It's pretty useful at times. And well, everybody, that is the two-string method in Java. All right, everybody, it's about time we get into abstraction. Overall, abstraction is the process of hiding implementation details and showing only the essential features. Think of it like this. If I'm teaching somebody how to drive, I'm not going to open up the hood of the car and explain how the engine works. I'm instead going to tell the user that the gas pedal is to drive and the brake is to stop the car. Abstraction is the process of hiding implementation details. A user just needs to know what the gas pedal is and what the brake is. We can make classes and methods abstract by using this abstract keyword. This provides a few benefits. Abstract classes can't be instantiated directly. We can make classes and methods abstract by using this abstract keyword. This provides a few benefits. A user just needs to know what the gas pedal is and what the brake is. We can make classes and methods abstract by using this abstract keyword. ये अच्छा था जॉन A सीना user just needs वाला. to know what the gas pedal is and what the brake is. We can make classes and methods abstract by using this abstract keyword. This provides a few benefits. Abstract classes can't be instantiated directly. Abstract classes can also contain abstract methods, which must be implemented. They can also contain concrete methods, which are the opposite. These are real and physical methods, you could say. Concrete methods are inherent. भाई मीम बहुत तगड़ा था यार, दोबारा देखने का मैं. Process of hiding implementation details. A user just needs to know what the gas pedal is and what the brake is. We can make classes and methods abstract by using this abstract keyword. This provides a few benefits. Abstract classes can't be instantiated directly. Abstract classes can also contain abstract methods, which must be implemented. They can also contain concrete methods, which are the opposite. These are real and physical methods, you could say. Concrete methods are inherited. So I know that's a lot. Let me give you an example. We're going to be creating an abstract class that can't be instantiated directly, meaning we can't create any objects from this class. In this demonstration, we're going to create some shape objects. Shape is going to be the parent. Then we'll have circle, तो ये पहले हम लोग triangle, and rectangle classes as its children. So we're going to go to new, Java class. We will create a shape class. ये लिख लेते हैं सारा उसमें, और हम लोग यहाँ पर एक नया जावा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा. नो बिल्ड टूल्स, ये जाओ लाइफ शेप. पहले इसको बंद कर दूं मैं, है ना. हम शेप पे आ चुके हैं. शेप डॉट जावा. वाह वाह बेटे वाह. शेप डॉट जावा. ठीक है, अब हो गया. इसको 2 बार बड़ा कर देता हूँ मैं. अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, काम आएगी. abstract used to define abstract classes and methods. Says methods. अरे मल्टी लाइन कमेंट्स लो यार. देखो यार, वैसे मुझे बुलेट्स अच्छे लग रहे थे जो मल्टी लाइन कमेंट्स में आते हैं. हाँ, abstract used to define abstract classes and methods. Abstraction is the process of hiding implementation details. Abstraction is the process of hiding implementation details. And showing only the essential features. And showing only the essential features.
हमने ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग देखी, वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म था। एनकैप्सुलेशन दिखा है कि क्लासेस में सारे मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होना, उनको एनकैप्सुलेट करने देना एक ही क्लास में, और फिर उसका यूज करना डायरेक्टली अपने ऐप डॉट जावा या मेन क्लास में। और फिर हमने अब देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन दिख रहे हैं, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, और हम बोलते हैं सिर्फ एसेंशियल फीचर दिखाएंगे, मतलब उसको हाइड करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि चीज़ों को डायरेक्टली हमारी क्लास से ना देख सके। मतलब वी आर लाइक एडिंग लेयर्स टू add more privacy, more security, मतलब less transparency, तो वो बहुत ज्यादा हाइडिंग करने के लिए। और हम हमारे सारी बेसिकली, और इनहेरिटेंस देख ही लिया हमने कि कहते हैं चाइल्ड चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता है, जो पहले से ही पेरेंट क्लास में प्रेजेंट है। सिंपल। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, इतना जान लो। एक मिनट गाइस, मुझे बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, एक मिनट। पता नहीं। चलिए गाइस, वापस आ गए हम लोग। Can abstract classes can be directly instantiated can be instantiated directly instantiated directly. Can't contain abstract methods. Must be implemented. Can contain concrete methods which are inherited. Some which are inherited. Triangle and rectangle classes as its children. So we're going to go to new, Java class. We will create a shape class. Then a class for circle. A class for triangle. Then a class for rectangle.
Our shape class is going to be abstract. We can't create any shape objects. Before the word of class, we will add this keyword of abstract. We can't create any shape objects. It's an abstract class. Now, circle, triangle, and rectangle are going to extend the shape class. Circle extends shape. Circles are a type of shape. Same thing applies with triangle and rectangle. Let's attempt to create a shape object. Shape equals new shape. And we get an error message. Shape is abstract. It cannot be instantiated. Since shape is an abstract class, we can't create any objects from this class. It adds a little bit of security to our program. We don't want anybody creating any generic shape objects. We want them to create a certain kind of shape, a circle, a triangle, or a rectangle. But we can create some circles, triangles, and rectangles, so let's do so. Circle equals new circle. Triangle equals new triangle. Rectangle equals new rectangle. We can create circle, triangle, and rectangle objects, just not shape, because it's an abstract class. That's good though, because we don't want people creating any shape objects. It's too generic. We want the user to pick a certain kind of shape. Abstract classes can contain abstract methods and concrete methods. We can create circle, triangle, and rectangle objects, just not shape, because it's an abstract class. That's good though, because we don't want people creating any shape objects. It's too generic. We want the user to pick a certain kind of shape. Abstract classes can contain abstract methods and concrete methods. We don't want people creating any shape objects. It's too generic. Circle, triangle, and rectangle objects, just not shape, because it's an abstract class. That's good though, because we don't want people creating any shape objects. It's too generic. We want the user to pick a certain kind of shape. Abstract classes can contain abstract methods and concrete methods. An abstract method is a method which must be implemented by its children. Within our shape class, we will define an abstract method. Use the abstract keyword. Let's list a return type of a double. Every child class of the shape class needs an area method. I'll add a comment that this is an abstract method. Abstract. So within our circle class, we get an error message. Circle must either be declared abstract or implement the abstract method of area. Circle is going to inherit this abstract method of area from its parent of shape. We need to implement this method, so let's do so. This is going to be an overridden method. We need the annotation of override. We need to define a method of area. But we'll fill it in momentarily. Just for now, I'm going to return 0. And now that error message goes away. Since we inherit from the shape class, and there's an abstract method of area, we need to implement this method. This helps to ensure consistency among the children classes. You can see that we're missing that same method with triangle and rectangle. So why don't we copy this code where we override the area method and paste it. We'll be filling these in later. Going back to our shape class, abstract classes can contain abstract methods and concrete methods, which are kind of the opposite. Concrete methods are defined and inherited within an abstract class. Let's define a method of display. This method doesn't return anything, the return type is void. To our shape class, abstract classes can contain abstract methods and concrete methods, which are kind of the opposite. Concrete methods are defined and inherited within an abstract class. Let's define a method of display. This method doesn't return anything, the return type is void. We'll just output the following. This is a shape. I'll add a comment that this is a concrete method. In an abstract class, a concrete method is inherited. Within our circle, triangle, and rectangle classes, we don't need to implement it. We don't need to override this method, it's inherited. Going back to our main Java file, if I was to take my circle object, call the display, we don't need to override this method, it's inherited. Java file, if I was to take my circle object, this method doesn't return anything, the return type is void. We'll just output the following. This is a shape. I'll add a comment that this is a concrete method. In an abstract class, a concrete method is inherited. Within our circle, triangle, and rectangle classes, we don't need to implement it. We don't need to override this method, it's inherited. Going back to our main Java file, if I was to take my circle object, call the display method, we get the following output. This is a shape, and that applies with triangle and rectangle too. Triangle.display, rectangle.display. This is a shape, this is a shape, this is a shape. This concrete method of display was inherited from the shape class, their parent. Now we'll define the area methods. Area is an abstract method. That means that the children classes have इतने तक कर लेते हैं गाइस पहले. इसने जो भी किया अभी. ओके. एक बनाएंगे हम लोग सर्कल डॉट जावा, फिर बनाएंगे ट्रायंगल डॉट जावा, फिर बनाएंगे रेक्टेंगल डॉट जावा. ये तीनों एक्सटेंड करेंगे. सर्कल एक्सटेंड शेप, शेप, ट्रायंगल एक्सटेंड शेप, rectangle extend shape. Is that fine? हाँ. अब यहाँ पे हम इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं. ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया. बिल्कुल हो गया. और अब इसमें हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे जो इसके चिल्ड्रन ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं. जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होता है ना गाइस, वो बस उसके चिल्ड्रन इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट डबल एरिया. ये
ये ना इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो सकता है किसी ऐप या जावा एप डॉट जावा और मेन डॉट जावा में, ना इसका कुछ चलते कहीं ये मेथड इसके क्लास के अंदर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, बस चिल्ड्रन ही इसके इम्प्लीमेंट करेंगे। ये खुद की क्लास के अंदर इसका मेथड नहीं इम्प्लीमेंट होगा गाइस, इसके चिल्ड्रन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब अब कॉन्क्रीट मेथड्स क्या होता है जो इसके चिल्ड्रन इनहेरिट करेंगे, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, कॉन्क्रीट मेथड है। ये है कि वॉइड क्या मेथड है, डिस्प्ले। पहले एनिमल क्यों खुला हुआ है, एनिमल हटाते हैं, वॉइड डिस्प्ले सिस आउट दिस इज अ शेप, ठीक है। सर्कल अब अब इसको अब लिखा है द टाइप सर्कल मस्ट इम्प्लीमेंट एंड द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड शेप डॉट एरिया, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, तो अभी के लिए हम कर लेते हैं डबल एरिया रिटर्न 0। हाँ, यहाँ भी कर लेते हैं डबल एरिया रिटर्न 0। इधर भी कर लेते हैं डबल एरिया रिटर्न 0। was inherited from the shape class, their parent. Now we'll define the area methods. Area is an abstract method. That means that the children classes have to define it. To calculate the area of a circle, we'll need a radius. We'll define that as an attribute. All circles will have a radius attribute, double radius. And we'll need a constructor, a circle constructor. When we construct a circle object, we have to pass in a double for the radius. This dot radius equals the radius we receive. Now the formula to calculate the area of a circle will be, we're going to return access the math class, access the constant of pi from the math class, times radius. That's how to calculate the area of a circle. Now for our triangle, we need the following. A double for base, a double for height. We need a constructor. Parameter 1 will be double base, parameter 2 will be double height. This dot base equals base. This dot height equals height. For the area, we will return 0.5 times base times height. Then we have a rectangle. Double length, double width. We need our constructor of rectangle. Parameter 1 will be double length, parameter 2 will be लेंथ double width. इनटू विड्थ This dot length equals length. This इनटू dot width विड्थ। equals लेकिन यार इसमें times height. ट्रायंगल, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है ना ट्रायंगल की एरिया कैलकुलेट करने का, पता होगा ना, रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेर एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए वेर ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। उसके लिए क्या आपको तीनों साइड लेनी पड़ेगी ट्रायंगल की। ये एज्यूम कर रहा है बंदा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट वाला ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, यहाँ पे एज्यूम कर रहा है। तो आपके दिमाग में अगर ये डाउट आ रहा है तो अभी हम प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कर रहे हैं, ये सब मैथ सीखने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप इग्नोर कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ, मत ध्यान दो। Then we have a rectangle. Double length, double width. We need our constructor. और हाँ, वो था अंडर रूट एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय 2 मिस हो गया था। Rectangle. Parameter 1 will be double length, parameter 2 will be double width. This dot length equals length. This dot width equals width. Return length times width within the area method. And we're good. Let's go back to our main class. We're missing those. So, हम लोग पहले तो सर्कल ट्रायंगल बना दिया था, हमने डिस्प्ले भी करा दिया, लेकिन पहले हम लोग अब यहाँ पर एरिया को अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। तो उस सर्कल में शिट सर्कल जाते हैं, सर्कल बनाए, सर्कल यहाँ है, तो हम इसको क्या करेंगे। इंटरेस्टिंग तो यार ये सब पुराने 8th-9th क्लास की याद दिलाएगा आपको। 8th-9th साइंस में क्या कर देते हैं हम लोग, एरिया मेजरेशन हम लोग सीखते थे, है ना, तो उसमें हमें एरिया निकालना सिखाते थे। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये होगा मैथ क्लास में एक फंक्शन होता है पाई। अब ये पाई जो है एक स्टैटिक कांस्टेंट होगा, इसलिए डायरेक्टली मैथ क्लास यूज कर ले रही है। इतना तो आपको पता चल गया होगा, इतना हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पढ़ा रहे हैं हमें, तो इतना तो पता चल ही होगा। फिर हम जाते हैं ट्रायंगल पे, ट्रायंगल का करते हैं, ट्रायंगल का हमें बेस और हाइट चाहिए। तो
यहाँ से ले लेते हैं डबल बेस और यहाँ लेते हैं डबल हाइट। यहाँ तक सही है। अब ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा एरिया और रिटर्न कर दे रहा है फ्रैगमेंट। इजी है। और यहाँ पर है डबल लेंथ और यहाँ है डबल विड्थ। इज दैट ऑल राइट? और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न लेंथ इंटू विड्थ। इजी, पता इजी है ना। अब यहाँ पे बस हमको डिफाइन करने की जरूरत है। ऐप डॉट जावा में जाके इसको हटा के सर्कल सर्कल इक्वल टू न्यू सर्कल। देखते हैं बंदा जो वैल्यूज देगा वही दे दूंगा मैं, अपने से वैल्यू लेने का मन नहीं कर रहा मेरा। ट्रायंगल ट्रायंगल इक्वल टू न्यू ट्रायंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल इक्वल्स न्यू रेक्टेंगल। यहाँ एक एल मिस हो गया है, ले आते हैं, ले आए है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कल डॉट डिस्प्ले। ये तो इनहेरिट किया ना हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप से, और हमने अब इम्प्लीमेंट भी कर दिया उसका। क्या बोलते हैं, ये कॉन्क्रीट मेथड हमने इनहेरिट किया है और जो उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एरिया, वो हमने इम्प्लीमेंट करा है, वो हमने इम्प्लीमेंट करा है। तो सर ये हो जाएगा ट्रायंगल डॉट डिस्प्ले। ये चल कैसे रहा है मुझे एक मालूम नहीं चल रही चीज। ये जब हमने वो कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया, कंस्ट्रक्टर अभी डिफाइन नहीं किया। कंस्ट्रक्टर जब डिफाइन नहीं करेंगे तब तक वो एरर नहीं आएगा वहां पे। तो हम एक चला के देख सकते हैं, रेक्टेंगल डॉट डिस्प्ले। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली एक बार रन करके देखते हैं कि डिस्प्ले वाला फंक्शन चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अब तक चेक नहीं किया ना हमने। दिस इज अ शेप, दिस इज अ शेप, दिस इज अ शेप। सर्कल भी एक शेप है, ट्रायंगल भी एक शेप है, रेक्टेंगल भी एक शेप है। क्यों नहीं होंगे शेप? शेप तो शेप होता है, बस इनकी साइड्स और में डिफरेंस है, इस तरह से मुड़ी हुई है ये सब। तो एक में 3 साइड, एक में 4 है। और अगर बहुत ज्यादा इनफाइनाइट साइड्स हो जाए तो किसी शेप में आप इनफाइनाइट साइड्स दे दोगे तो क्या बन जाता है, वो सर्कल बन जाता है। थोड़ी मैथ्स आ गई, इग्नोर करते हैं, मैथ्स को इग्नोर करते हैं। वाह। तो हम लोग आ रहे हैं अब किधर, अब हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है इन सबका। ये तो वेरीफाई हो गया। कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। ट्रायंगल से नहीं, हम सर्कल से स्टार्ट करेंगे। सर्कल डबल रेडियस, दिस डॉट रेडियस इक्वल्स रेडियस। हिस कैन नॉट बी रिजॉल्व। ये क्या बकचोदी है, दिस डॉट रेडियस इक्वल्स रेडियस। ठीक है, पता नहीं हिस कैसे हो गया था, ताज्जुब की बात है ना। और ट्रायंगल का बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। ट्रायंगल कंस्ट्रक्टर डबल बेस और डबल हाइट। ठीक है, और हम लोग कर लेंगे दिस डॉट बेस इक्वल्स बेस, दिस डॉट हाइट इक्वल्स हाइट। यहाँ भी हो गया। रेक्टेंगल पे जाते हैं, इसका भी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। रेक्टेंगल डबल लेंथ डबल विड्थ। रेक्टेंगल, हाँ ठीक है। यहाँ हो जाएगा दिस डॉट लेंथ इक्वल्स लेंथ। करंट ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें लेंथ दे देनी है जो हमने आर्गुमेंट या पैरामीटर्स पास किए, और इसकी लेंथ हमें लेंथ दे देनी है, इसकी विड्थ हमें विड्थ दे देनी है। ठीक है, मजे। अब यहाँ आएंगे 3 एरर्स, क्योंकि हमने पास नहीं किया वैल्यूज अपनी जो जो इनको चाहिए थी। तो देखते हैं अपना भाई क्या पास करेगा। Arguments, we have to pass them in.
For our circle object, let's say the radius is 3. For the triangle, the base and height will be 4 and 5. The rectangle, the length and width will be 6 and 7. अच्छा ये 3 4 5 6 7 अच्छा ठीक ये 3 4 5 पता नहीं क्या हो रहा है मैं कॉमा क्यों नहीं दबा पा रहा हूँ हाँ और यहाँ पे 6 7 नाइस 7 7 7 7 7 7 7 7 Oof. Shower, shower. Sorry, shower, shower. Shower, shower. No. What should we do? We are going to output using system.out.println, take our circle called the area method. Then do this with triangle and rectangle. अच्छा ठीक है रुको मैं देखूंगा देखने में क्या जा रहा है अच्छा 28.2 7 10 और 42 आना चाहिए ठीक है आंसर ही पता चल गया ना सही अब इसने फॉर्मेट किया तो वो मैं नहीं करने वाला भाई 0.2f करके फॉर्मेट उससे फायदा क्या है भाई चलो ठीक है भाई हटा देते हैं ये पता चल गया कि ये करेगा Tangle. ट्वेंटी एट 10 28.27 10 और 42 बढ़िया आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है एनी एरिया मेथड इंप्लीमेंट होके चल गया Here's the area of each of our shapes, our circle, our triangle, and our rectangle. So that's the abstract keyword. Abstraction is the process of hiding implementation details from a user and showing only the essential features. That's why we created a shape class that's abstract. We can't directly create any shape objects. We want a user to create a certain kind of shape, whether it's a circle, a triangle, or a rectangle. A shape is too generic. An abstract class can contain abstract methods, which need to be implemented by the children classes, or concrete methods, which are inherited, and the children classes will have access to it. All right, everybody, so that is abstraction and the use of the abstract keyword in Java. सही है यानी एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के भी अपने मेथड्स और वो होंगे लेकिन कुछ जो कॉन्क्रीट वाले हैं वो देखने जरूरी नहीं है और जो एब्स्ट्रैक्ट वाले भी हैं वो हर चाइल्ड अपने लिए इम्प्लीमेंट करे हम एक जॉनरिक मेथड ऐसा बना नहीं सकते हैं हर हर जो जो हर चीज बोलते हैं वो वही इम्प्लीमेंट करे अपना खुद से इम्प्लीमेंट करो गाड़ी खुद से चलाओ अब गाड़ी का इंजन और बाइक का इंजन अगर सेम है मान लो सेम है तो आप इंजन खोल के बैठ देखने तो नहीं लग जाओगे कौन सा इंजन था आपको बस कल तो इम्प्लीमेंट करना है ना गाड़ी पे पेडल मारना है नहीं सॉरी गाड़ी पेडल नहीं गाड़ी की मतलब क्लच और एक्सेलरेटर दबाना बाइक का पेडल मारना है ना आपको यही देखना है ना भाई गलती से निकल गया गाड़ी का पेडल आई एम सॉरी एक तो इस ऐड से मेरे को बहुत चिढ़ है per annum. What? 44 lakhs? That is 44 right now. भाई मेरे को कान फट गई To make around 90 lakhs per 90 lakhs per annum All right, what's going on, everybody? In this video, I got to explain interfaces using Java. An interface is very similar to an abstract class. In fact, there's a lot of overlap where you could use either one, but there's a few key differences. An interface is a blueprint for a class. It specifies a set of abstract methods that any implementing classes must define. One key difference is that by using interfaces, we can achieve multiple inheritance-like behavior. Normally with inheritance, अच्छा 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 अच्छा, सही है यानी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी जो multiple specifies a set of factors that implementing classes must define supports multiple inheritance like behavior ठीक है पर इंटरफेस अलग होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा नहीं वो एक कीवर्ड होता है मतलब अब देखते हैं क्या होता है मैं इंटरफेस भूल गया थोड़ा सा गाइस मैं 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ ना माइंड मेरा फट जाए समझने की कोशिश करो थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी होना पड़ता है सो लेट्स गो a class can only have a single parent, but by using interfaces, a class can have multiple parents, like 2, 3, or more. So in this demonstration, we're going to create two interfaces. चलो अब हम लोग थोड़ी देर ब्रेक ले रहे हैं गाइस
गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ, सो बेसिकली हम कहाँ थे? इंटरफेस। इंटरफेस के लिए देखते हैं कौन सी क्लास बनाए हुए हैं। Let's go to File, New, Java class. Rather than creating a class, we're going to create an interface. We will create an interface of prey, and the other for predator. File, New, Java class, interface, predator. We're going to be declaring some methods. अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे। तो एक नई क्लास बना रहे हैं, इसका नाम रखेंगे हंट। हंटिंग। जावा ब्रो, राइट, ओके। तो इसका नाम रखेंगे हंटिंग। रीनेम नहीं करेंगे, छोड़ो। अब जो दे दिया है ना। इसको लेंगे नाम प्रे डॉट जावा। वाह, डिलीट। प्रे डॉट जावा पब्लिक इंटरफेस। इंटरफेस प्रे, ठीक है। प्रेडेटर डॉट जावा। इससे पहले हम यहाँ डेफिनेशन नोट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन? पहले दो बड़ा कर देते हैं इसको, अब सही रहेगा, ठीक है। वहां पे हम लोग में क्या कर रहा है? इंटरफेस का मीनिंग है इंटरफेस। इंटरफेस इज इक्वल्स टू, पहले देखते हैं एक स्पेस ही छूटी है ना। अच्छा, यहाँ चलो एक ही स्पेस छोड़ता हूँ मैं, ये बहुत कम लग रहा है मुझे। हाँ, अब सही है। इंटरफेस इक्वल्स टू ब्लूप्रिंट, blueprint for a class that specifies a set of abstract methods. That specifies a set of abstract methods that implementing classes must define. ठीक है। Supports multiple inheritance like behavior. देखेंगे कैसे होता है multiple inheritance like behavior। अब देखते हैं। And the other for predator. File, New, Java class, interface, predator. Predator, तो यहाँ बनाएंगे predator डॉट जावा। क्लास नहीं, इंटरफेस। इंटरफेस, ठीक है। We're going to be declaring some methods, but not defining them. If a class inherits from the prey interface, they will have to finish defining a method of flee. The return type will be void. If you're considered prey, you need a flee method to run away. If you're a predator, you need to define a method to hunt because you're a predator. Now we'll be creating three classes. File, New, Java class. The first class. अच्छा, We're going to be declaring some methods, but not defining them. If a class inherits from the prey interface, they will have to finish defining a method of flee. The return type will be void. If you're considered prey, you need a flee method to run away. If you're a predator, you need to define a method to hunt because you're a predator. Now we'll be creating three classes. File, New, Java class. The first class. void void flee।
ओ माय गॉड, आई डोंट हैव टू डिफाइन इट। कोई और क्लासेस जो मेरे को इनहेरिट करेंगी वही डिफाइन करें। void hunt, यहाँ मुझे हंट करने है। दोनों में टेंशन है, एक में बचने की टेंशन, एक में खाने की टेंशन। अब देखते कौन सक्सेसफुल होता है। Then fish will create a fish class, and hawk. Going to our rabbit Okay class. then. Rabbits are typically considered prey, not predators, unless you count that one rabbit from Monty Python and the Holy Grail. That's the exception. Our rabbit class is going to implement the prey interface. क्या था ये रील? Predators, unless you count that one rabbit from Monty Python and the Holy Grail. That's the exception. Our rabbit class is going to implement the prey interface. We get a warning message. Class rabbit must either declare abstract or implement abstract method flee. Since the rabbit class is implementing the prey interface, we have to finish defining this method that's declared within the prey. अच्छा, तो यहाँ पे हम बना देंगे रैबिट जावा, और इसमें शायद प्रे प्रेडेटर को कैपिटल रखा है, हमने वहां नहीं रखा है। कोई नहीं, इसको रीनेम करते हैं। इसको रीनेम करेंगे प्रे को, हाँ कर दे, ठीक है। इसको रीनेम कर दे, प्रेडेटर को कर दे, ठीक है, सही है। प्रे प्रेडेटर हो गया रैबिट, और ये इम्प्लीमेंट्स प्रे। मस्ट सेट मेथड फ्ली, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स नहीं, यहाँ पे हम लोग प्रेडेटर हो गया, रैबिट हो गया, हॉक फिश डॉट जावा इम्प्लीमेंट्स प्रे। यहाँ क्या हो गया, हॉक डॉट जावा इम्प्लीमेंट्स प्रेडेटर। Interface. It's kind of like a contract. The prey interface is telling the rabbit class, hey, if you're going to implement me, you need to define this method of flee. We'll need to do that in order to create rabbit objects. We're going to be overriding this method using the override annotation. This method will be flee, void flee. And we'll want to add this access modifier of public. It's a publicly accessible method. In this method, we're going to output the following. Let's say the rabbit is running away. And that error should go away. Let's go back to our main class. We'll create a rabbit object and test it. Rabbit, rabbit equals new rabbit. Let's take our rabbit object, have it call the flee method. And this should work. Yes, the rabbit is running away. Now let's go to our hawk class. Hawk will implement the predator interface. We have to override this method of hunt, because with the predator interface, it's kind of like we're signing a contract. If Hawk is going to implement the predator interface, then we have to finish defining this method. We will add the override annotation and define this method. And then again, we do need an access modifier. We'll pick public. Let's output the following. The hawk is hunting. Let's create a hawk object. Hawk equals new hawk. Our rabbit is fleeing. Let's take our hawk object. Use the hunt method. Okay, we have the rabbit is running away. The hawk is hunting. Now, rabbits don't have a hunt method, and hawks don't have a flee method. Now, one key difference with interfaces compared to abstract classes is that you can implement more than one interface. So fish, they eat smaller fish, and they flee larger fish. They could be considered both prey and predators. The hunt method. Okay, we have the rabbit is running away, the hawk is hunting. Now, rabbits don't have a hunt method, and hawks don't have a flee method. Now, one key difference with interfaces compared to abstract classes is that you can implement more than one interface. So fish, they eat smaller fish, and they flee larger fish. They could be considered... थोड़ा स्लो करके देखना पड़ेगा, जो की डिफरेंस ने बोला बहुत तेज बोल दिया थोड़ा। यार मच्छर, हाँ। Hawk object, use the hunt method. Okay, we have the rabbit is running away, the hawk is hunting. Now, rabbits don't have a hunt method, and hawks don't have a flee method. Now, one key difference with interfaces compared to abstract classes is that you can implement more than one interface. So fish, they eat smaller fish, and they flee larger fish. They could be considered both prey and predators. We will implement two interfaces. Implements prey, comma, predator. वो अच्छा ऐसा क्या?
इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो सकते हैं लेकिन मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इनहेरिट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। Both of these methods, we have to finish defining both. अच्छा, कैसे छीन दिया भाई तूने। हम्म, predator डॉट हंट। तो फिश ने implements prey implements predator। तो ऐसे हम लोग को लिखना होगा। अच्छा, वर्ड फ्ली, तो हम लोग यहाँ इससे सॉर्ट करेंगे। द रैबिट is the rabbit is running away। यहाँ पे हमने कर दिया। पब्लिक, ठीक, फ्ली पब्लिक था क्या? अच्छा ठीक है, पब्लिक इंटरफेस है। ओ अच्छा ठीक है, हमने इसलिए बोला इसने, हम यहाँ ओवरराइड हमने नहीं लिखा है। ओवरराइड, अच्छा ठीक है, ये नहीं पता था मुझे भी। इसने किया होगा, नहीं किया होगा, ठीक है। वॉइड, वॉइड हंट, दिस इज आउट। द हॉक इज हंटिंग। फिल्टर रैबिट हो गया, हाँ हो गया, ये भी हो गया। फिर से हम लोग, ठीक है, पब्लिक और हैशटैग ओवरराइड। अगर हम इसको हंट्स कर देंगे ना, ठीक है, यहाँ हमारा आ जाता है। अगर हम ओवरराइड लिखते हैं तो ठीक है। मैं ऐप डॉट जावा खोलना, फिश को बाद में देखते हैं, हर फिश को बाद में देखते हैं। हो जाएगा आज। तो रैबिट, रैबिट इक्वल्स टू न्यू रैबिट और हॉक, हॉक इक्वल्स टू न्यू हॉक। मेरे पन्ना, एक मिनट यार, एक मिनट गाइस। अरे कुछ पके सबसे लेना, सबसे लेना, सबसे लेना। ये तो चलो, हाँ, इनके हम लोग मेथड्स इंप्लीमेंट करेंगे जो इन्होंने
इम्प्लीमेंट किए थे उस इंटरफेस से, प्री ऑपरेटर से, रैबिट डॉट फ्ली और हॉक डॉट हंट। तो हम लोग करते हैं रैबिट इज रनिंग अवे, द हॉक इज हंटिंग। ठीक है, Again, we're going to use the override annotation. We will create a publicly accessible method of flee, where we will print the fish is swimming away. And we need a hunt method too. Add the override annotation. This is a public method of hunt, where we will print the fish is hunting, let's say. All right, let's test it. We will create a fish object. अच्छा ठीक, वाइड फ्ली, पहले ओवरराइड ही डाल देते हैं, ओवरराइड वाइड फ्ली sys out the fish is running away। ऐसे इंटरेस्टिंग लगता है लिखने में से, जो मतलब ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन साइड में वाले क्रॉस क्रॉस तो इंटरेस्टिंग लगता है। Wide hunt, sys out the fish is hunting। तो पब्लिक, तो ये तो हमने कर दिया वाइड फ्ली वाइड हंट, एक वाइड फ्ली पब्लिक वाइड हंट। अब यहाँ पे हम लोगों को एक फिश बनानी होगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। वाह, क्या कविता है यार जो सिखाई गई बचपन में। फिश डॉट फ्ली फिश डॉट हंट, fish is running away, fish is hunting। Alright, Fish equals new fish. Our fish can flee, and our fish can hunt. The fish is swimming away, the fish is hunting. Our fish object implements both the prey and predator interfaces. It has to define these two methods. So that's one key difference with interfaces compared to abstract classes. A class can inherit more than one interface. Normally with inheritance, you can only have one parent, but this is a way around that using interfaces. Fish are considered both prey and predators. Alright everybody, so that is a quick introduction to interfaces. An interface is a blueprint for a class that specifies a set of abstract methods that implementing classes must define, and it supports multiple inheritance-like behavior. There's a lot of overlap where you can use abstract classes or interfaces. You should be familiar with both. And well everybody, that's a quick introduction to interfaces using Java. If you want to become a pro Python developer without having any prior knowledge on the subject, then join. नहीं करना भाई ज्वाइन, भाई इतना तो So yeah, it's about time I explained इरिटेट कर रहा है polymorphism ना using Java. भाई। Polymorphism is a Greek word. Poly means many, morph means shape. Together, you get the concept of many shapes or forms. It's a general programming concept. Objects can identify as other objects, objects of different types. Objects can be treated as objects of a common superclass. A dog identifies as a dog, but it can also identify as an animal. It can also identify as an organism. It can also identify as an object. It can identify as more than one thing. In this topic, we're going to create a few vehicle objects. Let's create a few classes, file, new, Java class. We will create a superclass of vehicle. This class doesn't have to be abstract, but let's make it abstract. We can't create any vehicle objects. We will declare. चलो ठीक है, समझ गया। एक मिनट गाइस, थोड़ी सी खुजली मच रही है मुझे।
तो गाइस हम वापस आ चुके हैं। ओके। हमें व्हीकल का बनाना है। अब नया जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम यहाँ जाते हैं, अपना जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। व्हीकल 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 भी बोलते हैं, व्हीकल भी बोलते हैं, व्हीकल बोलते चलो। व्हीकल 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 के व्हीकल डॉट जावा। बहुत सही यार, एक्टिवेट करने में इसको 2 घंटे लग जाते हैं। व्हीकल डॉट जावा। यहाँ हम एक कॉन्वेंट डालेंगे। 2 बार बड़ा कर दिया हमने कि अच्छे से दिखे, ताकि और Declare an इसमें abstract हम method लोग that doesn't return anything. करेंगे। The return type is void. If you're a vehicle, you need a go method. So what we're going ओके, इसमें लेकिन हमें कमेंट डालना पड़ेगा अपना पॉलीमॉर्फिज्म we will वाला। create a superclass of vehicle. In this topic, we're going to create a few vehicle objects. ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि जो क्लास है कोई वो किसी और क्लास की तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। डॉग कैन बी एनिमल, ऑर्गेनिज्म, है ना। हाँ, प्रेडेटर, प्रे, कैसा आइडेंटिफाई करना है वो उस पर डिपेंड करता है। पॉली मैनी शेप, समझ रहे हो, मैनी फॉर्म्स। पॉली पॉली क्या ऐसे लिखा है इसने? अच्छा ठीक है, पॉली इक्वल्स मैनी। मॉर्फ इक्वल्स शेप। ठीक है, अब क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट्स कैन आइडेंटिफाई। अच्छा, ऐसा भी सोचूं मैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पर सही है। सही जगह क्यों नहीं आ रहा? ओ ऐसा है ही है, ठीक है। इसको यहाँ से करते हैं फिर स्टार्ट। नहीं ठीक है, यहाँ से चलते हैं स्टार्ट। ऑब्जेक्ट्स वो है ही ऐसे, कैन आइडेंटिफाई एज अदर ऑब्जेक्ट्स। डिफाई as other objects. Objects can be treated as objects of a common superclass. Objects can be treated as objects of a common superclass. Okay, is that very fine? I think so. Now, what we have to do is कि हम लोग यहाँ पे हम इसको abstract class बना रहे हैं। Let's create a few classes. File, new, Java class. We will create a superclass of vehicle. This class doesn't have to be abstract, but let's make it abstract. We can't
अभी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं 5-10 मिनट, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा टाइम बड़ा लग रहा है ना। Create any vehicle objects. We will declare an abstract method that doesn't return anything. The return type is void. If you're a vehicle, you need a go method. So what we're going to be doing is creating a few different types of vehicles: a car, bike, and boat class, which will inherit from the class of vehicle. So let's create these classes. File, new, Java class. We will create a car class that extends the vehicle class. But there is an abstract method of go that we need to define. We will use the at override annotation. The method will be return type of void, go. All we'll do is output, you drive the car. All right, let's do this with a few other classes. I'll just copy this method because we'll reuse it. We'll create a bike class, bike extends vehicle. And we need that method of go. You ride the bike. And a boat class, file, new, Java class, boat. Boat extends vehicle. You sail the boat. That is good enough for now. Going back to our main Java file, let's create these objects. Starting with a car. Car equals new car. Bike equals new bike. Boat equals new boat. Each of these objects has a go method. For example, let's have our car object use its go method, followed by bike.go method, and boat.go method. ठीक है, समझ गए। तो 9 मिनट बीते हैं हमारे, तो इसमें एक void go मेथड है। और बॉडी और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसकी क्लासेस इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। कॉन्क्रीट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमें डिफाइन करना था, ठीक है, कॉन्क्रीट वाला भी नहीं। तो अब यहाँ पर हम कार डॉट जावा एक्सटेंड्स व्हीकल, ठीक है, और यहाँ बाइक डॉट जावा एक्सटेंड्स व्हीकल, ठीक है। यहाँ पे बोट डॉट जावा जैब हो गया भाई, जैब हो गया, लिटरल जैब हो गया, कोई नहीं। बोट डॉट जावा और ये एक्सटेंड्स चलते व्हीकल, ठीक है। In this case, we have to override. Override में तूने ब्रैकेट लगा दिया फिर से भाई। void go चल गया। वहां इंटरफेसेस में पब्लिक वगैरह का चक्कर पड़ रहा था ना यार, पता नहीं कैसे पड़ रहा था। यहाँ नहीं पड़ता पब्लिक वगैरह का चक्कर, इंटरफेस में पड़ता है। आपको पब्लिक रखना पड़ता है वहां पे, ताकि आपकी विजिबिलिटी वहां की उससे कम ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ये यू ड्राइव द कार। ये मैं लगा था, ये इंटरेस्टिंग लगा था मेरे को, यू ड्राइव द कार। कॉपी कर लेते हैं जैसे उसने किया, फिर कॉपी करने के बाद मैं लिख नहीं सकता क्या यार, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ओवरराइड void go, और ये हम लोग से आउट यू राइड द बाइक, ठीक है। एट द रेट ओवरराइड override void go sys out you sail the boat,
now what we have to do is simply कुछ नहीं करना, app.java खोलेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन हो गई है इसकी व्हीकल की हर जगह गो की, है ना। तो हम लोग करेंगे कार कार कुछ न्यू कार, बाइक बाइक इक्वल्स न्यू बाइक, बोट बोट इक्वल्स न्यू बोट, ठीक है यार। तो कार डॉट गो 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 एक लैंग भी है यार, गो एक लैंग्वेज भी है यार, ये भी नहीं भूलना है। काश मिल जाती यार गो, मेरे को यार डेटा पढ़ना है यार, आपको पता है एक्सट्रीम मिला है मुझे पढ़ने के लिए, गो चाहिए था मुझे, क्या करें, कोई नहीं, जो जो मिला है वो भी सही, डेटा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो कार डॉट गो बाइक डॉट गो बोट डॉट गो चला के देखते हैं। यू ड्राइव द कार, यू राइड द बाइक, यू सेल द बोट, बढ़िया। You drive the car, you ride the bike, you sail the boat. So let's say we would like to have a race. We're going to place all of these objects within an array, our car, bike, and boat objects. So what should the data type of the array be? Let's attempt to create an array of car objects and place our bike and boat objects within that array, and we'll just see what happens exactly for learning purposes. I will create an array of cars. The data type is car. It's an array named cars equals curly braces. Let's stick our car, bike, and boat objects within here. We're already getting a few error messages. Incompatible types. Bike cannot be converted to car. Bikes and boats don't identify as cars. Cars identify as cars. That's one of the shapes that bikes and boats don't have. They don't identify as cars. If this were an array of bikes, bikes equals our array of objects. नहीं होगा, Then give another error message. Car cannot be converted to a bike. convert to a You bike, can assume the same thing applies with boats. Cars and bikes don't identify as boats. What we could do is declare an array of what they have in common. Well, our car, bike, and boat, they all extend the vehicle class. We can say they vehicle, also identify as vehicles. We're going to change the data type of our array to hold vehicles. We have an array of vehicle तीनों objects. व्हीकल के जैसे Let's आइडेंटिफाई change our array करते name हैं। to be vehicles. Cars identifies cars, but also vehicles. Bikes identifies bikes, but also vehicles. Boats identifies boats, but also vehicles. That's the one thing they all have in common. They're all extending the vehicle superclass. They're also considered vehicles. That's another one of their forms, their shapes. For every object within this array, I would like to have each object use its go method, like we're racing. Well, what we could do is use a for each loop. What's the data type of the array? Well, it's vehicle. We have an array of vehicles. We will give a nickname of each vehicle as vehicle in my array of vehicles. For every vehicle in this array of vehicles, let's take each vehicle. Call the go method. Take every vehicle vehicle object, dot go, call its go method. Here's the result. This array of vehicles, let's take each vehicle. Call the go method. Take every vehicle object, call its go method. हाँ Here's the result. You drive the car, you ride the bike, सही you है। sail the boat. तो इसने क्या करा है, व्हीकल व्हीकल्स व्हीकल का हम लोगों ने एरे बना दिया, व्हीकल्स, ऐसे हम चेक भी कर लेते हैं ऊपर वाले, इक्वल्स टू कार बाइक बोट, ठीक है ये चल जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करने की ट्राई करें कार कार्स, इसने यही बताने के लिए, अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि हमने कार कार्स करने का ट्राई किया और न्यू कार करा, क्योंकि मैं अपने सिस्टम में चेक करना जरूरी है ना काम कर रहा है कि नहीं, कभी कभी इसमें जरूरी होता है कार बाइक और बोट। तो बाइक और बोट डोंट आइडेंटिफाई एज अ कार, दे डोंट आइडेंटिफाई एज अ कार, कैन नॉट कन्वर्ट बाइक टू कार। ऐसे ही हमने इसको अगर बाइक्स कर दिया है ना, और यहाँ पे बाइक कर दिया, तो ये बोलेगा कार कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ बाइक, कार डजंट आइडेंटिफाई एज अ बाइक, समझ रहे हो इसको, बाइक कर दिया हमने, कार कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम कार टू बाइक, ठीक है। ऐसे हमने कर दिया बोट, और यहाँ कर दिया बोट्स, तो कार बाइक कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ बोट, बाइक डजंट आइडेंटिफाई एज अ बोट। इसलिए हमने कुछ ऐसी क्लास ली जिससे तीनों एक्सटेंड करने हैं, ये कार एक्सटेंड कर रहा है व्हीकल को, बाइक एक्सटेंड कर रहा है व्हीकल को, बोट एक्सटेंड कर रहा है व्हीकल को, व्हीकल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है लेकिन एक्सटेंड तो हो रही है ना। तो हम इसका और उसका मेथड इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं तीनों वो, तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हीकल्स इक्वल टू कार बाइक बोट। अब हमने एक फॉर ईच लूप लगाया, तो व्हीकल्स फॉर व्हीकल व्हीकल
को इन व्हीकल्स, चलते हम क्या करेंगे, व्हीकल डॉट गो, बस चलेगा, मक्खन चलेगा। देखो यू ड्राइव द कार, यू राइड द बाइक, यू सेल द बोट, वहां भी प्रिंट हुआ है यू राइड द कार, यू राइड द बाइक, यू सेल द बोट। सही है, इसको हटा देते हैं, सिर्फ इसको चलाते हैं। यू ड्राइव द कार, यू राइड द बाइक, यू सेल द बोट। ठीक है, बढ़िया। Oh, and another thing I'm forgetting. Polymorphism can also be achieved through using interfaces. Let's delete our vehicle class. We'll create a new Java class. This will be an interface of vehicle. Rather than extending the vehicle class, we will implement the vehicle interface. We will declare a फर्क method क्या of पड़ गया? that doesn't return anything. These methods do need an access modifier. Let's just say public. So polymorphism can be achieved this way too, through using interfaces, if you prefer interfaces. In summary, polymorphism means many shapes. It's where objects can identify as themselves, but also other objects. Objects can be... मैं कमेंट लिख देता हूँ। सेम फॉर इंटरफेसेस, सेम फॉर इंटरफेसेस, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू? be treated as objects of a common superclass. And well, everybody, that is an introduction to polymorphism using Java. Hyderabad's Aerocity, a 1,500 acres SEZ near Rajiv Gandhi International Airport in Shamshabad, is set to redefine urban living. Developed by GMR Aerocity Hyderabad, this futuristic mixed-use development will feature offices, retail hubs, entertainment zones, hospitality, healthcare, education, aerospace, and logistics, all set to open in phases by 2030. With Hyderabad Metro's Airport Express line providing seamless connectivity through the city, this location offers the perfect blend of work, life, and leisure. Aerocity's master plan includes office spaces with operational and upcoming towers, including one of the world's largest yet World Trade Centers. Aerospace like Safran, Tata Boeing, Sikorsky, Lockheed Martin. Retail hubs. Java. What's going on, people? Today I got to explain runtime polymorphism, also known as dynamic polymorphism. Dynamic How I explain it in a single sentence is when the method that gets executed is decided at runtime based on the actual type of the object. In this demonstration, a user is going to pick a type. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा इसे। उफ, रन टाइम पीएम एक बनाते हैं हम, एक जावा की वो नया प्रोजेक्ट। एक मिनट गाइस, मुझे अपनी चप्पल चाहिए। अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आ रही होगी अब आपको मेरी आवाज। हाँ, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ठंड कैसे लग रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इस कारण सिर भी अजीब लगने लगा ठंड के कारण। डेस्कटॉप पे गए हम जावा ब्रो लाइव, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया प्रोजेक्ट लोकेशन,
और इसका नाम है रन टाइम पीएम। और हम इसके लिए क्या होगा क्लास? Of animal they want is a pet, a dog or a cat. But that's going to be determined at runtime, after the program is already running. We'll create a total of 3 classes. Of animal they want is a pet, a gets executed is decided at runtime based on the actual type of the object. In this demonstration, a user is going to pick a type of animal they want as a pet, a dog or a cat. But that's going to be determined at runtime, after the program is already running. We'll create a total of 3 classes. First, we'll create an animal class, which will be a parent class. We will create a class of animal. अच्छा, एनिमल बनाना है, ठीक है। ये हमने बना लिया एनिमल डॉट जावा। ओके भाई, 2 सेकंड तो इसको एक्टिवेट करने में लगेंगे, इतना इरिटेशन होती है भाई। यहाँ बना लिया मैंने एनिमल डॉट जावा, वेरी गुड। फिर हमें क्या करना है? हाँ, वो अंदर है, ठीक है। तो अब हम बोल रहे The थे program is already running. We'll create a total of 3 classes. First, we'll create an animal class, which will be a parent class. We will and at runtime, after the program एक बार देख लूं, हाँ ये ऑन है, ठीक है, आपको सुनाई दे रहा होगा पूरा। इसको मैं 2 बार पढ़ा कर लेता हूँ, ठीक है। कमेंट पहले लिख लेता हूँ ना, वो जरूरी है। रनटाइम polymorphism when the method that gets executed gets decided at runtime based on the actual type of the object. At runtime based on the actual type of the object, ठीक है, वेरी गुड। ओके, नाउ ये तो हो गया। अब एनिमल क्लास बढ़ाएगा। ओ शिट, नहीं, हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं आया अभी। रन टाइम में गेटर्स एंड सेटर्स नहीं, रन टाइम Java. What's going on, people? Today I got to explain runtime polymorphism, also known as dynamic polymorphism. How I would explain it in a single sentence is when the method that gets executed is decided at runtime based on the actual type of the object. In this demonstration, a user is going to pick a type of animal they want as a pet, a dog or a cat. But that's going to be determined at runtime, after the program is already running. We'll create a total of 3 classes. First, we'll create an animal class, which will be a parent class. We will create a class of animal. We might as well make this an abstract class for good practice. We don't want anybody creating any animal objects. We will have an abstract method. The return type is void. This method will be speak. When an animal speaks, they'll say something unique. We'll create a dog class, file, new, Java class. We will create a class of dog that extends the animal class. But we do need a speak method. We will use method overriding. The return type is void. With our speak method, we will output the following. The dog goes woof. All right, then we need a cat class. File, new, Java class. We will create a class of cat. Cat extends animal. And we'll just copy the speak method, just to save a little bit of time. हाँ, मैं भी वही काम करूंगा यार। Cat speaks. We'll output the cat. तो अब हमें क्या करना है? सिंपल, हमें डॉग डॉट जावा क्रिएट करूंगा। एनिमल को पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड स्पीक, क्या एनिमल बोलेगा तो जरूर हर एनिमल वर्ड स्पीक। अच्छा ठीक है यार, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड स्पीक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बाकी क्लासेस, ठीक है। तो so we are here at this point, we are here with
जहाँ हम लोगों को जहाँ हम लोगों को इसको ओवरराइट करना है, हमें इसको ओवरराइट करना है। सही है, ओवरराइट। यहाँ होगा void speak, इसमें क्या होगा, just sys out the dog goes woof woof and इसी को हम कॉपी कर देंगे cat और जावा। ये मुझे ओवरराइड लिखने में थोड़ा मजा आता है गाइस, तो मैं लिखूंगा और अपने से लिखूंगा, मेरे को मजा आ रहा है बेसिकली। तो void speak है ना, और sys out the cat goes, I think meow meow है ना, so ऐसे हाँ। Cat goes meow. That's good enough for this example. Since animal is an abstract class, we can't create any animal objects. I'll attempt to do so. Animal equals new animal. And we get an error message. Animal is abstract, cannot be translated. That's good though. Animals are too generic. We would rather have a user create a certain kind of animal, either a dog or a cat. In this demonstration, we're going to have a user pick if they want a dog or a cat, but we don't know which one they're going to pick. So why don't we do this? Let's declare an animal object, but not instantiate it. We will assign our animal equal to a new dog or a new cat based on the user input. So animal. This will either be animal equals a new dog or animal equals a new cat based on the user input. We will declare an object that's at least an animal. We'll accept some user input. We'll need a scanner. Scanner equals new scanner. We will pass in system.in and import this class, java.util.scanner. We'll need a prompt. Would you like a dog or a cat? We'll say 1 equals dog, 2 equals cat. Nice, I'll use bro. print rather than print line because I like the importance Very of line. nice. Let's declare a variable of choice. This will be an integer. We'll use our scanner, call the next एक int बार method. को ये कुणाल भाई ने भी सिखाया था अपनी वीडियो में, मुझे बहुत पहले याद है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है ये वाला एग्जांपल कि बिल्कुल रन टाइम का बिल्कुल फील दे रहा है ये। And then we'll do the following. We'll examine if our choice variable is equal to 1. If it is, we'll finish instantiating our animal object, but we'll assign it to be a new dog object. Then we will have our animal use its speak method. So if it's a dog, it should go woof. Else if So ultimately the type of the object is determined by the right side. New dog किस टाइप का ऑब्जेक्ट है वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा मेथड यूज होगा, समझे? एनिमल के पास भी स्पीक है, लेकिन डॉग के पास स्पीक है, लेकिन जो क्लास इनहेरिट कर रही है ना, उसके टाइप से डिटरमाइन होता है, यानी कि कौन सा मेथड चलेगा, जो क्लास ओवरराइड करे उसी मेथड चलेगा, समझ रहे हो? यानी राइट साइड वाले का बेसिकली। एनिमल का तो एनिमल का बन नहीं सकता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो। is equal to 2, then we will instantiate our animal object as a new cat. And have our animal use its cat speak का method. स्पीक चलेगा। You could add an else clause, but it's not really necessary. This is good enough for now. हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम यहाँ पे app.java खोल लेते हैं। तो स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। पहले मैं वॉइस चेक करता हूँ कोई जा, अबे साले कान फट जाएंगे। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं कि ये आ नहीं रहा, तो फिर खुद ही लिख लेते हैं भाई। फिर लेट्स फिक्स दिस, इंपोर्ट स्कैनर है ना। ओके, सिस आउट। पहले एनिमल हमने अभी दिया नहीं है, इसका एनिमल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हमने कि न्यू एनिमल बनाने, ये अलाउड नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये देखो कुछ एरर देगा, cannot instantiate the type animal जावा। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते आप, तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे, बस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाया हमने। तो sys out would you like a dog or cat? 1 equal dog, 2 equal to cat। 1 equals to dog,
2 equals to cat, है ना? So this is how it is. So अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं int choice scanner dot next int. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो खुद से लिख सकता हूँ मैं. int choice equal to scanner dot next int. if choice equals 1, then guys हम लोग क्या करेंगे, एनिमल को न्यू डॉग दे देंगे और इसका मेथड चलेगा स्पीक वाला क्योंकि ओवरराइड कर रहा है. और हम क्या करेंगे, एनिमल डॉट स्पीक. क्या एनिमल का भी तो मेथड है, न्यू डॉग. डॉग तो एनिमल, लगता है मैंने एक्सटेंड नहीं किया है, एक्सटेंड्स करना है. एक्सटेंड्स एनिमल, तभी सोचो एरर क्यों आ रहा है. अब हो जाएगा काम. एक्सटेंड्स एनिमल, extends animal, extends animal. इसने कितना तेज टाइप कर पाता हूँ. extends animal, देख लिया इतना ही तेज चल रहा है. चलिए इतना ही तेज टाइप कर पा रहा हूँ. ठीक है, ओके. else if choice equals 2, then what we have to do, we will say animal equals to new cat और हम यहाँ कर देंगे animal dot speak. इसका भी तो मेथड है लेकिन इंप्लीमेंट क्या है, कैट क्लास में, तो उसने ओवरराइड किया तो उसी का मेथड यूज करेंगे हम लोग. बढ़िया और बढ़िया. चल घूम नहीं रहा. स्कैनर क्लोज नहीं किया हमने, क्लोज कर लेते हैं. यहाँ पर काम खत्म हो गया ना. स्कैनर का तो कब काम खत्म हो गया था, और क्लोज एंड में कर लेते हैं. ठीक है. वन डॉग गोस वूफ, ये रन टाइम वाई डिसाइड हुआ. कैट गोस म्याऊ. ठीक है. Before running the program, we don't know what kind of animal we're going to create. It's either going to be a dog or a cat. If I select 1, we get a dog. The dog goes woof. If I select 2, चलो मैं वुफ पे एंड करता हूँ. तो वुफ पे एंड करेंगे हम लोग. फिर हैं तो हम कुत्ते वाली हरकतें हमारी. लोन वुल्फ है ना, वुफ. तो वुल्फ, we get a cat. The cat goes meow. The actual method that we call is determined at runtime, after the program is already running. Before we run the program, we know that we're going to use a speak method. We're just not sure which one. So that's runtime polymorphism. It's when the method that gets executed is decided at runtime. Get a cat. The cat goes meow. The actual method that we call is determined at runtime, after the program is already running. Before we run the program, not really necessary. This is good enough for now. Before running the program, we don't know what kind of animal we're going to create. It's either going to be a dog or a cat. If I select 1, we get a dog. The dog goes woof. If I select 2, we get a cat. The cat goes meow. The actual method that we call is determined at runtime, after the program is already running. Before we run the program, we know that we're going to use a speak method. We're just not sure which one. So that's runtime polymorphism. It's when the method that gets executed is decided at runtime, based on the actual type of object that we create. And well, everybody, that is an introduction to runtime polymorphism using Java. Welcome to How to Start a Startup. In this course, I'll share with you the exact steps I took to build my own business, Contact Out, to 8 figures in revenue. Today's video is about the process of executing on a startup. The startup process can be broken down as LIFT, learnings, ideas, and tests. The faster that we can go through this iterative process of coming up with business ideas, validating and testing our business ideas, learning from our tests, refining our business ideas, and doing this iteratively, that's how we ultimately succeed at our startup. Let's dive into how to get startup ideas. I'd start by picking an industry with a big market size that I'm passionate about. I'd find a company. Alright everybody, today I'm going to be explaining getter and setter methods using Java. Getter and setter methods help protect object data, and they add rules for accessing or modifying that data. Here's a demonstration. We're going to create a class of car. File, new, class. We will create a car class. A few attributes that cars could have include a string. To create a class of car. File. So this would be a get car.
गेट कार हम लोग बनाते हैं। Oof. My God. Sometimes I even wonder where does that come from? Get car. So this has now become get car. Okay. तो हम लोग यहाँ पर एक कार क्लास बनाएंगे। हर बार का है भाई ये। अभी थोड़ी ज्यादा थकावट हो रही है, 20 मिनट में भी बहुत थकावट हो जा रही है गाइस। जब से आए 20 ही मिनट हुआ ट्यूटोरियल का, लेकिन फिर भी थकावट तो हो रही है। आराम से ले जाएंगे 9 तक आराम से ले जाएंगे आज, कैसे न कैसे करके। New class. We will create a car class. Java. Behave, protect object data and add rules for accessing और modifying them। ठीक है। the hell यहाँ पे प्राइवेट एग्रीगेशन। ओह, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है गाइस, जो मैंने कभी देखी नहीं है, ना आपने भी कभी नहीं देखी होंगी। वाओ, लिटिल वाओ यार। एड स्टार्ट हो रहा है 9 5 से जा रहा है। कोई नहीं, चल जाने दो, जाने जाने। protect object data and add rules for accessing or modifying them, and add rules for assessing or modifying them। ठीक है। getters equals methods that made a field readable, methods that make a field readable। ऊपर में चेक कर लेता हूँ, स्ट्रीम चल रही है ना? हाँ बढ़िया चल रही है अभी तक। चलो हाँ, मेक अ फील्ड रीडेबल। ठीक है। सेटर्स इक्वल्स टू मेथड्स दैट मेक अ फील्ड सेटेबल होगा। सेटेबल इज अबाउट राइटेबल। वे इंडियन साले, सेटेबल हर चीज में इंडियन बना रहा था हम लोगों का। सेटेबल राइटेबल होता है भाई। चलो अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लेट्स सी, पब्लिक है नॉट क्लास पर ओनली सिंटेक्स एरर रिपोर्टेड। अच्छा ठीक है, ये एरर बाद में देख लूंगा मैं। अच्छा ठीक है आ गया। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, क्लास पाथ में आ गया। हाँ मुझे पता चल गया था क्या एरर है। अब That data. Here's a demonstration. We're going to create a class of car. File, new, class. We will create a car class. A few attributes that cars could have include a string of model, a string of color, and an int, let's say price. Then a constructor. We'll have 3 parameters. A string of model, a string of color, and an int of price. We will assign this dot model equals model. This dot color equals color. This dot price equals price. Let's construct the car object. Car equals new car. Pick a model, a year, and a price. I've already used red Mustangs for too many examples. I'll pick something else. Let's say a Charger that... ये लिख लेते हैं अपना, तब तक थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा हुआ है क्योंकि फिर मेरे को अगले ही बढ़ना है। तो स्ट्रिंग मॉडल, स्ट्रिंग कलर, इंट या डबल प्राइस होगा, डबल प्राइस होगा, देखते हैं यार। इंट प्राइस है, ओके ओके, इंट प्राइस। इस बार डबल नहीं लिया भाई ने।
इंट लिया है, ठीक है। कार ना, नहीं फर्क पड़ता यार। तो हाँ, स्ट्रिंग मॉडल, स्ट्रिंग कलर, इंट प्राइस। This dot model equals to model. This dot model equals to model. This dot color equals to color. This dot price equals price. ये हमने कर दिया. Okay. Now he is going to construct an object. Equals price. Let's construct a car object. Car equals new car. इसके हाँ, Pick a इसके model, मैं use, and थोड़ा price. रुकूंगा. I've already used red Mustangs for too many examples. I'll pick something else. Let's say हाँ, a बहुत Charger मस्टैंग हो गया भाई, that तेरी is yellow. Ford Mustang And बहुत the आ price will गई. be $10,000. I don't know if that's good or not. We don't even know the year of the car. Anyways, so we have our car object. हाँ. And then let's output these attributes just to test them. Car.color, I'll add a space character too, plus car.model, plus a space character, plus car.price. I'm intentionally not adding a unit of currency. So here's our car. I have a yellow Charger, and the price is 10,000. 10,000 of a unit of currency that you choose. But that's not important. With our car object, its attributes are publicly accessible, meaning we can view and change them easily. To demonstrate, let's say that the model of our car is now a Corvette. We have a yellow Corvette that is $10,000. We don't want the model of our car to magically become a Corvette. Once we assign its model to be Charger, we don't want it to change. What we could do when declaring these attributes is add this access modifier of private, preceding the data type. Private string model, private string color, Yeah. private int price. We can't access them. अब सही है. And let's test that. You can see that the font color already changed to red. I will attempt to print the car's color, model, and price. Color has private access in car. Model has private access in car. And price has private access in car. Since these attributes are private, we can't normally access them outside of the car class, but there is a way around that. And that is by using getter and setter methods. Getter methods make a field. तो बेसिकली गाइस ये कह रहा है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि अगर आप प्राइवेट ये सब चीज एक्सेस मॉडिफायर से फेमिलियर नहीं हो, मोस्टली नहीं होगे, इसलिए तो मेरी वीडियो देख रहे होगे, वरना क्यों ही देखते हैं ना। तो प्राइवेट, ठीक है। तो मैं क्या करता है, काम करता हूँ, हाँ, इसको हटाते हैं। कार इक्वल्स न्यू कार, और इसमें हम डालेंगे चार्जर येलो, चार्जर येलो, एंड इट्स प्राइस इज 10,000. ओके, अब ये तो हम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर तो हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, पर जैसे ही हम साउथ करेंगे, ये कार डॉट मॉडल प्लस कार डॉट कलर प्लस कार डॉट प्राइस, देन थिंग्स स्टार्ट टू गेट मेसी. और हमने ये ट्राई किया, कार डॉट मॉडल को हमने कॉर्वेट लेने का ट्राई किया, और दिक्कत, कर ही नहीं सकते. देखो यहाँ पे आएगा, दिस फील्ड कार मॉडल इज नॉट विजिबल. प्राइवेसी है भाई, मॉडल इज नॉट विजिबल, और चलाने की कोशिश करी तो और नॉट विजिबल. ये लो, आगे दिक्कत. ठीक है, तो अब क्या करना है, गेटर्स और सेटर्स का इस्तेमाल करना है. कैसे करेंगे भाई बताएगा. Readable. Setter methods make a field writable. Use get to read, set to write. We'll set Right. getter methods first. I would like the car's color, model, and price. Here's how we can do that. Within the car class, we will create a method. We'll start with the model. The return type will be string, because our model is a string data type. We'll create a getter method, following this naming convention. Get, then the name of the attribute, model. All we're going to do is return this dot model. And then we'll do this with the color and the price. And I'll just copy this method because I'm feeling a little lazy. We have get model, get color, return this dot color, and get price. Return this dot price. And this returns an integer, not a string, because our price is an integer. Let's go back to our main Java file. Rather than accessing these attributes directly, because we can't, we're going to call these getter methods, get model if you need the model, get color if you need the color, get price if you need the price. Replace car.color with car.getColor. And this is a method. Car.get model and car.get price. प्राइस. Work. Yep. चलो ये कर लेते हैं हम लोग. ज्यादा कुछ मेहनत बड़ा काम तो नहीं लग रहा मुझे, 2 मिनट में हो जाएगा. देख, सेम फंक्शन लिया उसने. हम क्या करेंगे, ये void get model और रिटर्न कर देगा दिस डॉट मॉडल.
वॉइड नहीं, स्ट्रिंग होगा ना, स्ट्रिंग गेट मॉडल, similarly string get color, return this dot color. कलर फंक्शन नहीं है, चूतिए, कलर फंक्शन नहीं है। और यहाँ पे इंट गेट प्राइस, तो रिटर्न दिस डॉट प्राइस। सिंपल भाई, सिंपल है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, कार डॉट मॉडल की जगह कार डॉट गेट मॉडल, नहीं, कार डॉट गेट मॉडल, इसका एम कैपिटल कर देंगे। मुझे फोन आया, क्या लगता है गाइस? नहीं, फोन आता तो आवाज बजती ना। Okay, but I do have a notification. Let's see. तो पिज्जा हट के नोटिफिकेशन से गाइस, बाय वन गेट 3 पिज्जा। Oh, किसी ने कुछ भेजा है मुझे, क्या भेजा है, क्यों भेजा है, किस लिए? ओके, रिक्वेस्ट, ठीक है, समझ गए। उसका मैसेज था कि कैसे बिल्ड फेल्ड। नहीं यार, ये बग था इसमें, मेरे को फिक्स करने की जरूरत है। ठीक है, तो कार डॉट गेट मॉडल हो गया, कार डॉट गेट कलर हो गया, एंड सिमिलरली हमारे पास कार डॉट गेट प्राइस हो गया। यार मजा नहीं आ गया? बिल्कुल हाँ, चल जाएगा तो बिल्कुल मजा आ जाएगा ना आपको, मुझे भी आ जाएगा। ठीक है, इसको कमेंट कर रहे हैं, बस मुझे लगता है एक बार इसको रख के रखते हैं, कुछ तो चलेगा यार इसमें, वरना नहीं, इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। फिर अभी के लिए हटा देना, मुझे कमेंट करना अच्छा नहीं लगता है, मैं हटा ही दे रहा हूँ, मुझे कमेंट करना अच्छा नहीं लगता। सिंपल है, नो प्रॉब्लम्स हैव बीन डिटेक्टेड। बड़ा डायनामिक था, लेकिन उस साले को रख के हम चलाएंगे और फिर बंद करेंगे। मेरा ओसीडी कहता है मेरे को बंद कैसे करना चाहिए। ठीक है, I let my OCD win right now, but I won't let it win forever. एक दिन खत्म हो जाएगा, एक ही दिन शव वो मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करे? हाँ जी, अब चार्जर येलो 10,000, अब बढ़िया चल रहा है, मजा आ गया, एरर नहीं आया कुछ भी। You can now read those attributes. We have a yellow charger and the price is 10,000. Another thing you can do too with getter methods, you can add additional logic. So with our getPrice method, let's instead return a string. We will return a unit of currency, I'll pick American dollars, plus the price. Let's see how that changes. This doesn't mean I won't do it. There we go. Yellow charger. I'm not an American guys, I'm Indian. And you can add additional logic when retrieving one of these attributes. And in this demonstration, I just added a $sign just to keep it simple. Then we have setter methods. Setter methods make a field writable. Going to our car class, we have model, color, and price. I don't want the model attribute. Also, okay, so string at price. Okay, यानी इंट नहीं होगा, इंट गेट प्राइस का स्ट्रिंग कर देते हैं। इतना तो भाई चलो ठीक है, चलता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन आई थिंक ओके, स्ट्रिंग कर देते हैं। यहाँ क्या एरर आ गया? अजीब नहीं है, इस साला कुछ भी करते रहता है। ओह समझ गया, इस बंदे ने ना स्ट्रिंग बनाने के चक्कर में वहां किया है। चलो ठीक है, To be writable, once we've declared the model of our car, we don't want to change it. Our charger can't magically become a Corvette, even though that'd be pretty cool.
But the color you can change, you can paint your car, and the price. You can sell your car for a different price. We'll declare setter methods for our color and price, but not the model, because we don't want this attribute to be writable. So let's scroll down to the bottom. Following a similar pattern, we're going to create a method. The return type is void. This will be set color. We have one parameter, a string of color. We will assign this dot color equal to the new color that we receive. We'll do this with our price too. Void set price. We'll have one parameter, an int of price. This dot price equals price, the new price that we receive. Okay, let's test these things. I'll attempt to access our color directly. Car.color equals, I don't know, blue. That's the first thing that came to mind. And car.price equals, you know what, the car's on sale, it's $5,000. Well, I can't change these. We still have that red text for color and price. Because the color and price attributes are still private. Instead, we're going to call these setter methods. We will set the color, and then pass in that new color, rather than assign it directly. Set color, pass in a new color. Set price, pass in a new price. 5,000. Then using our getters, we should be able to print these attributes. Yes, we now have a blue charger, and the price is $5,000. We don't have a setter method set up for the model. That's good though. We don't want the model to change. We only have set color and set price. If I attempt to access a set model method, अभी टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा कि अभी टाइम वेस्ट कर रहा है कि चलवाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना गाइस हमने जितना इस काम का था उतना ही करेंगे मुझे प्यास लग रही है गाइस वाइट मैं थोड़ी देर में पी लूंगा उसकी टेंशन नहीं है व्हाट सेट मॉडल दिस नॉट मॉडल और यहाँ पे आएगा हमारा एक स्ट्रिंग मॉडल this dot price equals this dot model यहाँ m आएगा स्मॉल और यहाँ मैं कर दूंगा this dot model equals model it's very fine okay अब void हम लोग कर लेते हैं set price तो set price कर लिया हमने void मैंने करा set price तो this dot price equals to price now there was nothing here so हम लोग क्या करेंगे int price है oh god मुझे फिर खुजली हो रही है गाइस को मैं अभी लेकिन इसको कंप्लीट करके ही निकलूंगा तो हमने ऐप करा अब यहाँ पे हमें चेंज करना है प्राइस और मॉडल कलर और प्राइस को मॉडल नहीं चेंज करना था हमें सेट कलर करना था आई एम वेरी सॉरी लेकिन हम एक ही बार में कर सकते हैं 3 जगह हम ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं आपको ऑल्ट होल्ड करना है फिर अपना लेफ्ट क्लिक माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना है ऐसे करिए ऑल्ट होल्ड करके ऑल्ट होल्ड किया और माउस का लेफ्ट क्लिक दबाते गए सीधा कलर में बदल गया सेट मॉडल फंक्शन से अब इसको यहाँ पे बस क्या करना है इसको कलर में बदलना है कलर बहुत बढ़िया ठीक है नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज यार तो हमारा टर्मिनल हट गया है तो बहुत अच्छी बात है फिर यहाँ पे आ जाते हैं ओके मेरी आदत है तो मैं यहाँ से एंटर कराता हूँ लेकिन वो काम क्यों करना है इधर से आओ कार डॉट सेट कलर हम कर देंगे ब्लू कार डॉट सेट प्राइस हम कर देंगे 5000 ट्राई नहीं प्राइस नाउ इट इज बेटर चार्जर ब्लू 5000 एक और कर लेते हैं कार डॉट सेट प्राइस हाँ 5000 बड़ी 5000 ना रखते कुछ और रखते थे नहीं इतना ही रखते हैं सेट प्राइस 5000 सो चार्जर ब्लू 5000 सो फिक्स नहीं करना भाई मुझे क्लैर गवार क्लैर CLAR है गवार भाई हाँ भाई एडमिन गवार set model method. It doesn't exist. यूट्यूबर गवार Change the model. If you want this attribute to be writable, well, then you could add a setter method. Void set model. नहीं Pass in a string नहीं भाई model. this is just a repetition Equals model. words And repetition then you can change it. We have a blue Corvette for $5,000, which is really cheap. But you know what? I don't want the model to be writable. Just readable. If you don't want ओके it to be पहले writable मत नहीं in the कर future, you can also add this नहीं keyword, a final. That adds an extra security measure.
If you don't want an attribute to be writable, when you declare it, you can also add तो this keyword, a final. That adds an extra security measure. ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। One last thing we should do with the एक price. जब इनिशियलाइज होगा फाइनल का मतलब भाई, जब ये एक बार इनिशियलाइज हो गया तभी वैल्यू एक बार ही दे सकते हो, उससे ज्यादा बार नहीं दे सकते। फाइनल का मतलब ये हुआ है, आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं बताया गया तो मुझे भी बता ही देगा, मुझे पता है अगली बार में, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ प्राइवेट फाइनल। और ये कभी चेंज नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, एक ही बार होगा। Add some additional logic. So with our price, let's do the following. Let's add a check. If our price is less than 0, then let's output the following. नहीं, नो भाई, Can't be मुझे less माफ than करिए। 0. Else, if everything checks out, if our price is 0 or above, then we'll assign this dot price equals the price that we receive. अरे वो फालतू का जो ट्यूटर है, ऑनलाइन यूट्यूबर है ना, वो साला एक वो एक जगह एक फंक्शन लिखा, उसमें वो प्रिंट कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लगा रहा है जिसकी जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट समझ आ गया मुझे, माफ कर दे भाई, नहीं करना मुझे। क्या बोलूं? Let's test it. I'll change the color of my car to be blue, but the price is going to be negative $100. We get that message. Price can't be less than 0. Color of my car to be blue, but the price is going to be negative $100. Equals the price that we receive as an argument. Let's test it. I'll change the color of my car to be blue, but the price is going to be negative $100. We get that message. Price can't be less than 0. हाँ भाई, ठीक है, एक्स्ट्रा लॉजिक लगा दिया भाई, तो बहुत स्मार्ट है, मान गया मैं, बहुत स्मार्ट है and तू, add rules for accessing or modifying that data. Getter methods बहुत make a field तेज है readable. भाई Setter तू। methods make a field writable. Depending on your object's attributes, you may want some to be readable, or both. It's up to you. And well, everybody, those are getter and setter methods using Java. दोस्तों, क्या आपके MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है? ध्यान से देखो, इसे कहते हैं को पायलट। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके पास नहीं होगा। ये आपके पास कब आएगा? 5 साल बाद। लेकिन मेरे लाखों All right, let's do this. Today I got to talk about aggregation in programming. Aggregation represents has a relationship between objects. One object contains another object as part of its structure, but the contained object or objects can exist independently. Basically speaking, an object can contain another object, but those objects can exist independently. What we'll do for this क्या or objects can exist. Setter methods make a field writable. Depending on your object's attributes, you may want some to be readable, or both. It's up to you. And well, everybody, those are getter and setter methods using Java. All right, let's do this. Today I got to talk about aggregation in programming. Aggregation represents has a relationship between objects. One object contains another object as part of its structure, but the contained object or objects can exist independently. Basically, अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा चीज है, कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ा रहा है। अब नई नई चीजें स्टार्ट हो रही है गाइस, अब मजा आने वाला है। ठीक है, एग्रीगेशन कैसे पढ़ाएगा, कौन सी क्लास क्रिएट करेगा, उस पर ऊपर डिपेंड है। Basically speaking, an object can contain another object, but those objects can exist independently. What we'll do for this demonstration is create some book objects. Then we'll create a library object to contain the book objects. The books and the library can exist independently. That's aggregation. The library object will have book objects. We'll create a new class of book, file new class. अच्छा, बुक क्लास क्रिएट करनी है। फॉन्ट बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया भाई ने, भाई मतलब लिटरली इंटरेस्ट आ जाए बंदे को। बहुत अच्छा इस्तेमाल किया इसने फॉन्ट। तो जा रहे हैं हम अपने नोबल टूल्स, यहाँ हम लेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, मैं क्या जावा ब्रो लाइव पे, ठीक है, मैं कह रहा जावा ब्रो लाइव पे जाना है। यहाँ मुझे क्रिएट करना है बुक, लाइब्रेरी बोल सकते थे, पर चलो बुक बोल दिया। यहाँ करूँगा क्रिएट में बुक डॉट चावा मैंने क्रिएट कर दी। ओके, Book. And a class for library. File new. पहले मैं लिख देता हूँ जो भी इसके We'll create a new डेफिनेशन है। class of book, file new class. न्यू क्लास, साला कैसे इतनी एसेंट देके बोलते हैं लोग, बिल्कुल फेक। वैसे इनकी फेक नहीं है, हम लोग जो बोलते हैं इनको कॉपी करने का ट्राई करते हैं, वो कितनी फेक निकलती है भाई। बुक डॉट चावा स्टार्ट फाइन, 2 बार बड़ा कर देता हूँ। वाह चूतिए। नाउ एग्रीगेशन, ग्रेशन है गेशन, एग्रीगेशन होगा वो, एग्रीगेशन है वो, इरिगेशन नहीं, एग्रीगेशन। represents has a relationship between objects,
one object contains another object as a part of its structure. The object as a part of its structure. Yes. But the contained objects can exist independently. But the contained objects, मतलब object के अंदर object exist independently. Okay. Book. And a class for library. File, new, class, library. Let's design our book objects. Let's say that books have a string of title and an integer. So public class book. Is that what we have to? Okay. हाँ ठीक है, इसको बनाने You देते can हैं include पहले. another two if you would like, but I don't want this example to be too big. We'll need a constructor for our book objects. We'll set the parameters. We need a string of title and an integer for pages. This dot title equals title. This dot pages equals pages. equals If you would like, pages. you can set these attributes to be private, but that might be overkill for this lesson. Why don't we create a method to display the book's info? This method will return a string. We'll define a method to display info. We will display the info of this book. Let's return the following. Let's return this dot title plus a space character plus this dot pages and a string of the word pages. And I think I'm going to enclose the number of pages within a set of parentheses. You can also use a printf statement if that's easier for you, but I want to try and keep this beginner friendly. Okay, that's good enough for the book class. Let's create a few book objects. Error. Why उधर error है? One equals a new book. But to construct a book, we have to pass in at least the following: a title and a number of pages. So I've picked out a few books already. Feel free to Okay. book. But to construct a book, we have to pass in at least the following: a title and a number of pages. So I've picked out a few books already. Feel free to choose your own if you'd rather choose different books. For the first book that I'll pick, I will pick The Fellowship of the Ring. This will be all one string. And the number of pages, at least according to Wikipedia, Fellowship है is भाई वो. 123. Then we'll create another book object. This will be book 2. Book 2 will be The Two Towers. The number of pages will be 352. And then book 3. Book 3 will be The Return of the King. The number of pages will be 416. All right, we have our independent book objects. Then what we'll do is stick them all within an array. We'll create an array of book objects named books equals. Then within a set of curly braces, we can place our book objects within here. Book 1, book 2, book 3. We have an array of book objects. Before moving on, let's test the display info method of each of these books. So we'll need a print statement. Book 1 dot display info. So we should get book 1, The Fellowship of the Ring, 423 pages. I'm just going to make one change. I'll put the right parenthesis at the end. That's better. Let's display book 2. The Two Towers, 352 pages. Book 3. The Return of the King, 416 pages. इतना लिख लेता हूँ मैं guys. वरना टाइम लगेगा काफी लिखने में इसको. So we have a string title, or we have a string page. ठीक है, और बुक कंस्ट्रक्टर होगा, इसमें जाएगा एक स्ट्रिंग टाइटल का और एक जाएगा स्ट्रिंग पेज का. इसमें हम बोलेंगे दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल.
रोल ऑन इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं गाइस, करना चाहिए था यार। 1 मिनट में आ रहा हूँ गाइस, थोड़ा एक रोल ऑन इस्तेमाल कर लो हल्का सा।
चलिए गाइस, वापस आ गए हम, वापस लाइव आते हैं बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी हिचकिचाने के। तो थोड़ी सी लाइटिंग है यहाँ पे, काश टेबल थोड़ी दूर होती, ऊपर से लाइटिंग आ रही है। सो बेसिकली You could also loop through this array using an enhanced for loop. The data हाँ, मैं ये बनाना था ना, तो वी वर मेकिंग दिस। ओके, और यहाँ पर एक फंक्शन था कि void display info, and this just what it does is it displays the info। ये क्या करता है, this dot title this oh my god, dot page page थोड़ा पास में रहता तो पेज वैसे अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो, हमें तीनों बुक्स कॉपी मारना है। ऐप डॉट जावा में जाते हैं, book book1 is equals to new book the fellow of the ring 423, the fellow of the ring, and it's at 423। ठीक है, what's wrong with this, undefined। अरे ये तो रहा, ये तो रहा। अरे यार, इंट पेज है यार, इंट पेज। ठीक है, ठीक है, इंट पेज। अब बुक book2 equals new book, और ये क्या होगा गाइस हमारा, द टू टावर्स, दो खंबे, द टू टावर्स। बीच बीच में कभी मैं ऐसा नहीं, मैं मेरी अपनी ऐसा तो नहीं कि किसी एक्टर से मैच हो जाए से, तो उस एक्टर जैसा मैं बोल रहा हूँ, आमिर खान जैसी कभी कभी टोन हो जा रही है मेरी। जस्ट डजंट मीन आई एम लाइक आमिर खान। अच्छा, अच्छा, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बोलो समझ आया। हाँ, लाइक इट्स माय, the return of the king, the return of the king, king। तो books is equal to book1, book2, and it's book3। type of each element in my array is book. For every book in my array of books, we'll print take each book. Call the display info method. अच्छा, ठीक है। for book book मतलब हमने कर दिया in books, what you will call is book dot display info। से काम आसान बन गया।
सही किया इसने, इसको अकल आ गई भाई कि ऐसे करते हैं। मेरे को देख के आएगा इस, जब मैंने किया ना तभी इसने स्टार्ट किया, मुझे ही देख के आई इसको पहले। चलो फेलो ऑफ द रिंग्स पेज, वाह क्या डिस्प्ले हो। तो टावर्स, द रिटर्न ऑफ द किंग, वाह। टू टावर्स में ये कैपिटल होंगे तभी शुरू में, द टू टावर्स, दो खंबे। यस, रन पे भी क्लिक करेंगे तो वही होगा। तो बढ़िया। अब देखते हैं एग्रीगेशन कैसे करेगा ये। And here's all the books that I have in my array. The Fellowship of the Ring, the Two Towers, the Return of the King. And we can delete this for loop. We no longer need it. Now we're going to create a library object. Our library object will contain our array of book objects, because libraries contain books. Going to our library class. What should libraries have? Let's say that our library should have a name. What's the name of the library? Maybe a year in which the library was established, int year. And libraries should contain book objects. We will create an array of book objects named books. We'll need a constructor for the library class. वाह, We'll need the following: a string for the name of the library, an integer for the year of the library, when was the library built, and an array of book objects. This dot Wow. name equals name. This dot year equals year. This dot books equals the books that we receive, this array. All right, going back to our Wow. main file, this is where aggregation is. ये बड़ा बढ़िया नहीं लगा मुझे यार। लाइब्रेरी का एग्रीगेशन किया ना, लाइब्रेरी और जावा, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग इंट ईयर और बुक्स का एरे, और इसने बुक्स, इट्स बुक बुक बुक, इट्स बुक का एरे बुक्स। लेट्स कंफर्म इट, it was books, no it was book, yeah book था, book and it's के books। so let's books, no books नहीं book, what was confused हो गया मैं guys, book books, okay। so अब हमें इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। so बुक, बुक क्या, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, हाँ लाइब्रेरी, स्ट्रिंग नेम इंट ईयर और बुक बुक्स। तो दिस डॉट नेम, यहाँ पे कुब्स भी कर सकता था मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जस्ट एक पैरामीटर है ना। या सुक्स भी कर सकता था, सक्स भी कर सकता था, बट लेट्स सी। दिस बुक सक्स बोलते हैं ना, बुक्स, नाइस। यहाँ बन गया हमारा बढ़िया सा कोड बेस। Going to come in. We will create a library object. Library equals new library. But we have to pass in the following as arguments to the constructor: a name for the library, a year for the library, and an array of book objects. So for the library, I'm going to say the NYC, the New York City Public Library. After a quick Google search, this library was built in the year 1897. Then we also need an array of book objects. I will pass in my array of book objects named books. This is aggregation. Our library object has book objects. Within the library class, let's also create a display info method for the library. We'll make it a little bit different. This method won't return anything. Let's say the return type is void. We'll name this method display info. We'll display the following information about this library. Let's output the following: this.year of the library, plus a space character, plus this.name. You can also use a printf statement if you would prefer to use that. I'm trying to keep this as beginner friendly as possible. So let's test this. क्या किसमें, क्या शिवम, क्या कुछ नहीं, वही जावा वाला कोर्स खत्म करने का ट्राई कर रहा हूँ। 8 घंटे 37 मिनट का तो हुआ है, 12 तक है, पता नहीं कब होगा।
तुम्हारा गोलैंग कैसा चल रहा है? काम दिया बहुत ज्यादा, काम बहुत दिया है टीचर। कैसे किए, चैट जीपीटी या खुद से? हाँ। हाँ, थोड़ी बहुत तो ले लेते हैं हेल्प, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बफर से? हाँ, बफी और रीडर, हाँ हाँ हाँ। बफी और रीडर है एक चीज। चलो। वो थोड़ा जो है स्पेस वगैरह लेकर हम लोग करते हैं ना, वहां पे काम आती है। द दिस डॉट ईयर, कुछ नहीं, वो इसमें चलो देख कर रहा था। तो वाइस यहाँ पे हम डिस्प्ले इन्फो लगा लेते हैं। अच्छा, इसने बुक्स का इसमें डिस्प्ले इन्फो में नहीं करा, वरना कांडी फट जाते। क्या करते हैं, क्या नहीं क्वेश्चन पूछते हैं। कौन? कंपनी, कौन सी कंपनी? क्या क्वेश्चन? जेंसॉल का बता रहा, जेंसॉल इंटरव्यू क्वेश्चंस ना। एम्बिशन बॉक्स पे जाओ, मिलेंगे। अरे वहां पे यार वो आ जाता है फिर, जो भी लॉगिन, लॉगिन का तो करने में क्या जा रहा है? करने में क्या जा रहा है? लिखने का पूछ लेता है यार, ये सब लॉगिन करो तुम भी अपने सैलरी में तो स्किप करने का ऑप्शन रहता है उधर। ठीक है। हाँ, लास्ट डोर है, एम्बिशन बॉक्स है, इन्हीं पे मिलेंगे। या फिर गिग्स और गिग्स पे जाओ, वहां टैग लगाओ क्वेश्चंस पे, जेंसॉल का आ जाएगा। नहीं, कोडिंग का कोई है, वो कोडिंग की नहीं है, जेएनपी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कोर का पूछ। हाँ, इसमें देख भी नहीं रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्वेश्चन। कैमरा स्क्रीन से ऑन है क्या? हाँ सर, वो भी दिखा दिए है। अरे तो क्या हो गया, जेंसॉल का देख लिया, इन लोगों को जेंसॉल की तैयारी करनी होगी तो कर लेंगे। गाइस, जेंसॉल में जाना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, पर आप चले जाओ, उसमें कोडिंग भी होती है, मन करे तो चले जाओ, रुकने वाला कौन है आपको? मैंने आपको दिखाई दिया रूट्स। चलिए अपना काम करते हैं। तो कोई देखा नहीं? कोई नहीं, यही होता है भाई। फिर अचानक से कोई सुपर चैट मार के चला जाता है, ले 40 रुपए भिखारी। फिर अचानक से कोई 10 रुपए का सुपर चैट करके चला जाता है कि ले भिखारी। क्या कर? अबे नहीं, नहीं करता, लेकिन जब स्ट्रीमर के 25-26 व्यूअर भी हो जाते हैं ना, फिर अचानक से किसी को मन, ऐसी अमीर अमीर पापा की औलाद ही देखती है स्ट्रीमर, या फिर जिनको पढ़ना होता है वो भी देखते हैं। गाइस, आप बुरा मत मानना, आप पढ़ने वाले लोग हो, है ना? तो पढ़ने वाले लोग भी जो अमीर होते हैं वो दे देते हैं 10-20 रुपए। मेहनत भी तो उतना। हाँ। हाँ जी, मैं भूल गया। द दिस डॉट ईयर, दिस डॉट नेम, अच्छा ठीक है ठीक है। द 1897 न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी लिखेगा, ये ठीक है। द, यार न्यूयॉर्क के दर्शन हो पाएंगे इस जन्म? बिल्कुल होंगे। डॉट ईयर, दिस डॉट नेम, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे जाके हम लोग लाइब्रेरी क्लास बनानी पड़ेगी।
You can also use a printf statement if you would prefer to use that. I'm trying to keep this as beginner friendly as possible. So let's test this. हाँ We will take our library object, call it display info method. library equals to new library. पहले ये हटाते हैं गाइस, है ना? तो हाँ, दिस पहले हम लोग पास करेंगे nyc पब्लिक लाइब्रेरी, फिर ईयर डालेंगे 1897। लो एक और दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है? और बुक्स, हाँ बुक्स, फिर डालेंगे हम लोग बुक्स। नहीं इट्स, हाँ बुक्स ही तो है। डॉट 1897 कर दिया तूने, अबे यार क्या कर रहे हो? हाँ कोई नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ भाई गाइस। तो लाइब्रेरी डॉट डिस्प्ले इन्फो, The 1897 New York City Public Library. Then within this method of display info for the library, let's also list all the books that it has. This library has aggregated a whole bunch of book objects, so then we can display them or use them for something. Let's output the following. Let's output books, available, then we'll use an enhanced for loop. The data type of what we're iterating through is book objects. For every book in my array of books, take each book, call the books, display info method. हाँ ये कर सकते थे। काफी टाइम जा रहा है इस वाले में गाइस, मुझे पता था ये करेगा ही, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब फॉर बुक, बुक्स, ऐसे नहीं, फॉर बुक, हाँ हाँ बुक इन बुक्स, अब हो जाएगा। हाँ बुक डॉट डिस्प्ले इन्फो, ये बुक टाइप का है ना, और बुक से क्या है? हमारा एरे है। बढ़िया यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बुक्स अवेलेबल, बड़ा अंग्रेज की औलाद है भाई ये। वैसे है भी भाई वो अंग्रेज यार। बुक्स अवेलेबल, ठीक है। We have to print it using a print line statement, because this method returns a string. There we go, let's test it. So after calling the display info method of the library, we should display the information of the library, including its books. The 1897 New York City. कोई नहीं गाइस, अभी थोड़ा धीरे चल रहा है, मुझे इसका वेट करना चाहिए था, तब जब ये सारा खत्म कर दे। स्नैक करने बाद में जाऊंगा मैं, इसको खत्म करके रहूंगा आज। तो यानी ये हटा सकता हूँ मैं, आई कैन इजिली रिमूव दिस, आई नो लॉन्गर नीड दिस, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ। सो इट इज 1897 NYC पब्लिक लाइब्रेरी बुक्स अवेलेबल, ठीक है। Public library, and we display the books available, which are the array of books that we have created. So that's aggregation. It represents has a relationship between objects. Our library object has book objects within it. There's another similar concept called composition. With aggregation, if you were to delete this library class, for example, I'll delete it. Well, these book objects can exist independently outside of the library. The books aren't built into the library, so they can exist independently, which is a key difference compared to composition, which is the next topic we'll cover. And well, everybody, that is aggregation using Java. Actually, I joined Wealth Club
on 28th July 2022. At that day, I don't have even 15,000 rupees for single payment. I requested you for part payment and you allowed me. Thank you for that. At that time, I was in scarcity mindset and I am tracking only my loan accounts. There are total 17 loan accounts and to the tune of 1 CR. एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सेल शीट बनाया था, अकाउंट नंबर, सीरियल नंबर, डेट ऑफ ओपनिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत बड़ा. जैसा कि आपने नेटवर्क ट्रैकिंग दिया था, आई वॉज यूज टू ट्रैक दैट लायबिलिटी एंड वो बढ़ता जाता था. एंड व्हेन आई मेट यू वन सिंगल स्टेटमेंट दैट इज. Hey everybody, in this video I'm going to explain composition to you in programming. Composition represents a part of relationship between objects. For example, an engine is part of a car. An object can be part of another object. This allows for complex objects to be constructed from smaller objects. In this ठीक है, समझ गया. कॉम्प्लेक्स तो इस कॉन्सेप्ट भी है भाई. अभी तो हम लोग कौन सी क्लास बनाई हुई है उसके हिसाब से देखते हैं. demonstration, we're going to create a car object. The car object. कार पहले से है यार. कार तो पहले से है यार. कॉम्पोजिट. We are all humans. Opposite. I should close it, I think so. हाँ. और यहाँ एक car.java बनाया गया. car.java. फिर मुझे इरिटेशन हो रही है गाइस क्योंकि इन्होंने इतना स्लो कर रखा है. हाँ जी, हाँ. car.java. readme.md में क्या है? Java world. Oh, welcome to the VS Code Java world. Here is a guideline to help you start to get just what you call. For this structure, workspace contains to follow this very form. PSV only. अब हमें comments डालने हैं. बीच में बकचोदी होगी guys, ignore. Okay. Composition आपसे क्या करवाना है? आप तो ऑडियंस वही सब देख ही रहे हो. मेरी बंदी थोड़ी ना, वरना मेरी बंदी है कोई. ठीक है, क्या पता वो भी सकती है. पार्ट ऑफ relationship between objects. Okay. For example, an engine. An engine is a part of a car. Is part of a car. Allows complex objects to be constructed from smaller objects. Allows complex objects to be constructed from smaller objects. Fine. Object is composed of an engine object. We will create a class of car and a class of engine. We'll begin with our class of car. What sorts of attributes? मतलब एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएंगे using smaller objects जो उसके पार्ट्स होंगे बेसिकली. engine.java. सही है. Should cars have, let's say, a string of model, an int of year, and an engine object. क्या हो गया? Now for the engine, we're not going to be passing in an engine object. Let's say that when we construct a car, an engine object, engine.
We'll need a constructor. We'll begin with our class of car. What sorts of attributes should cars have? Let's say a string of model, an int of year, and an engine object. Engine, engine. We'll need a constructor. We'll pass in a string for the model, an int for the year. Now for the engine, we're not going to be passing in an engine object. Let's say that when we construct a car object, we have to pass in a string for the engine type. Is it an inline engine? Is it a V6? That sort of thing. We will assign this.model equals the model that we receive. This.year equals the year that we receive. Now with our engine, this.engine, we're going to call the constructor for a new engine object. And then we can pass in our engine type. But we still, however, have to set up the constructor for our engine class. When constructing a car object, we will also be constructing a new engine object. So let's go to our engine class. Let's say that engines have a string of type. You could say engine कार इस केस में बड़ा ऑब्जेक्ट है और इंजन इस केस में स्मॉलर ऑब्जेक्ट है. But that would be redundant, I would say. Let's just say type. Then we need a constructor. For our engine class, we will need a string of type to pass in. This.type equals type. So going back to our car class, when we pass in a string for the engine type, you could say that this is type. This term is kind of ambiguous though, because a user is going to think that the type is for the car type rather than the engine type. So when you pass arguments, your parameter names can be different from the argument names that you pass in. We simply rename them when this constructor receives that argument. But type refers to the engine type. Alright, so this is a basic demonstration of composition. ठीक है. ये फिर भी स्ट्रक्चर में बस चल गया. ठीक है. int year, engine, 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 engine. Car, string, model, int year, model. This dot year, equals year. This dot engine equals new engine. Engine type. अब इसके लिए एक engine object बनाना पड़ेगा. Eng type engine string type. This dot type equals type. ये engine type होगा. सही है. We simply rename them when this constructor receives that argument, but type refers to the engine type. Alright, so this is a basic demonstration of composition. Now we'll construct a car object. Car equals new car, and then we have to pass in the following. A string for the model, an int for the year, and a string for the engine type. Pick a car that you like. This time I will pick a Corvette. The year will be 2025, and for the engine, I will pick a V8 engine. Then let's see if we have these details. I'm going to output my car objects, model, and these attributes I did not set to private, but you can set them to private and use getters and setters if you would like. So we have model, year, and we have an engine object. Here's what we have. We have our model, Corvette, year 2025. Now for the engine, our engine is an object. It's a reference data type. So if you output it directly, you're given a hash ID to represent that engine object. So if we need the type of engine, we're going to access our engine object, then get the type. So following our engine object, we will use that access modifier, that dot, then access the type, the attribute. वाह, ये हुई ना बात. नहीं, इसको कर लेंगे यार. ऐसा भी क्या? So the engine type is a V8. So it's like we have an object that's composed with another object. Our engine is part of our car. You know, let's ये हम नहीं करेंगे.
क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे। Engine got type. तो अब हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। Corvette 25 V8. Create a method for the engine. We'll create a start method. Void start. We'll output the following. Let's say, using a print line statement, अब use start repetition the होगा, ये मैं plus this dot type, meaning type of the engine, plus the word engine. Then going to our car class, let's create a start method for the car class. Void start. When we start the car, we also start the engine. Let's take this dot engine, call its start method. And then we can output something else too if we would like. Let's output the plus this dot model plus the words is running. Now, if we start the car, let's take our car. And then we can output something interesting else too if we तो would like. Let's take this dot engine, call its start method. And then we can output something else too if we would like. Start the plus this dot type, meaning type of the engine, plus the word engine. Then going to our car class, let's create a start method for the car class. Void start. When we start the car, we also start the engine. Let's take this dot engine, call its start method. And then we can output something else too if we would like. Let's output the plus this dot model plus the words is running. इंटरेस्टिंग यार, मुझे लगा अभी करा रहा है, लेकिन हर चीज बढ़िया ही है। तो गाइस, ये हमारा V8 इंजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। यू स्टार्ट V8 इंजन बाय द स्टार्ट V8 इंजन से हमने सिमिलरली कार बना, यहाँ आएगा यू स्टार्ट V8 इंजन। तो भाई स्टार्ट V8 इंजन, यू स्टार्ट V8 इंजन, फिर क्या था? हाँ, फिर हमारा void start, तो car.engine.start।
नहीं, engine dot start. यहाँ पे क्या लिखा है इसमें? This model is running. This dot model is running, है ना? ये मॉडल चल रहा है, द कॉर्वेट इज रनिंग आएगा। नहीं आ- अब देखते हैं आता है कि नहीं। तो हम लोग करके देखते हैं। कार डॉट स्टार्ट, लेट्स डू इट। You start V8 engine, the Corvette is running. Corvette is running. बढ़िया। Now, if we start the car, let's take our car, call it start method, and we should get the following. You start the V8 engine, the Corvette is running. Now, a key difference with composition is that if we delete our car object, that should also delete our engine, because our engine is part of our car. So to demonstrate that, I'm going to delete our car object, and we no longer have access to the engine. Alright everybody, that is composition. It represents a part of relationship between objects. For example, an engine is part of a car. This allows for complex objects to be constructed from smaller objects. And well everybody, that is composition using Java. Bro, you made it sound like once I learned Python, I'd have job offers lined up. But Python learn करना इतना easy नहीं है. Bro, I told you to learn Python using AI, not the boring old Python. Huh? Python using AI? Yes, AI takes away 95% of your headache. As you can automate. हाँ, वे कुछ भी करने के लिए सीखना ही पड़ता है, सब AI से सीख लोगे तुम लोग चूतियो। I gotta talk about wrapper classes. Wrapper classes allow primitive values, such as integers, characters, doubles, booleans, those sorts of things. Wrapper classes allow these primitive values to be treated as objects. We're basically wrapping primitive values within an object, kind of like a Christmas present. Generally, you don't need to wrap primitives unless you need an object for some reason, like if you're using a collections framework in Java. And wrapper classes also give you access to a lot of useful static utility methods. So let me give you a demonstration of wrapper classes. The method of creating wrapper classes I'm about to show you is actually depreciated, but it's going to help you visualize how this works, wrapping a primitive within an object. The modern approach is using a technique called autoboxing, but the method I'm about to show you is a good way to visualize this whole thing. So let's say we have an int of a, variable a. A equals 123. We can treat this primitive depreciated है तो हम उतना नहीं देखेंगे guys. Rather than declaring this variable as an int, we will use the wrapper class of integer. Integer हाँ, ये उतना यूज नहीं करते. equals a new integer. And then we're going to pass in that number, that integer, as an argument. A is an object. We're passing in that primitive data type, that int, as an argument to the integer class. पर एरर लिस्ट में यूज करते हैं. Value. Again, this is depreciated as of version 9, so you shouldn't do it this way, but this is a good way to visualize it. Then if you need a double, we'll use the wrapper class of double. Let's say variable b equals a new double. इतना भाई नहीं बहुत. Then we have char, which is character. That's the wrapper class. Character c equals a new character. Then pass in a character. I'll pass in a dollar sign. We'll add one more. Let's say a boolean. We will use the wrapper class of boolean. Boolean d equals a new boolean. Then pass in a boolean value. Here's just a few examples. These are all objects, A, B, C, and D. By wrapping these primitives within an object, that allows us to use these primitive values within collections frameworks, such as array lists, which we'll talk about in the next topic. The modern way to use wrapper classes is actually just to assign them directly to their primitive values. Just a few examples. These are all objects, A, B, C, and D. By wrapping these primitives within an object, that allows us to use these primitive values within collections frameworks, such as array lists, which we'll talk about in the next topic. The modern way to use wrapper classes is actually just to assign them directly to their primitive values. The class of integer A equals 123. Double B equals 3.14. Character C equals a dollar sign character. And then D equals true. This technique is called autoboxing. We're directly assigning these primitives into an object using a wrapper class. Now this is very similar to how we declare and assign strings. To create a string, you would say string, let's say E equals a string of characters, such as the word pizza. You can see that there's a similar pattern. We have always created strings this way. But with autoboxing, it's a similar process. These are all reference data types. They're a type of object. There's also a technique called unboxing to convert a wrapper class back to its primitive. This is unboxing. So let's say we would like to convert our object of A, it's an integer object, back to its primitive. Let's say int x equals, all you gotta do is set it equal to your object. In this case, our integer object of A. This is unboxing. We're taking a primitive that's wrapped in an object and unboxing it, we're unwrapping it, and setting it back to its primitive. If we were unboxing a double, we would say double, some variable, equals B. Or chars, char x equals our character object of C. And then boolean. ये एक नोट कर लेते हैं गाइस, बस नोट करने के लिए कि ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होती है. तो मैं अब जाऊंगा अपने जावा ब्रो पे, न्यू विंडो. शिवम 10 मिनट में स्नैक करने चलेंगे, ठीक है? जावा ब्रो पे चला गया. यहाँ मैं एक चीज बना दूंगा और इसको मैं 2 बार बड़ा ही कर देता, छोटा कर दिया भाई, बताओ, है ना? तो अब इसको हमें
बहुत कुछ बना दिया इसके अंदर हमने, तो इसके अंदर एक यानी नहीं आने क्यों नहीं नहीं बाद है आई नो बहुत कुछ है, बट आई डोंट हैव टाइम। रैपर डॉट जावा, पता नहीं मुझे यादें आ रही है गाइस, पर मैं ना याद नहीं करना चाह रहा, पर फिर भी आ रही, पर याद करना भी चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ याद रहे मुझे, क्यों अच्छे लगते हैं यादें मुझे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑटो बॉक्सिंग। क्या है ऑटो बॉक्सिंग? इंटीजर ए इक्वल टू 1 2 3, ए इक्वल टू 1 2 3 चल रही है ना साउंड? कहीं गलती से मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, साउंड ही नहीं चल रही हो तो कितना बेकार हो जाएगा। डबल बी, क्या था? 3.14। कैरेक्टर सी इक्वल्स टू डॉलर। कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में क्लोज करते हैं भाई, इतना। बूलियन डी इक्वल्स टू, वी कैन ट्रू दे देते हैं, ठीक है। और बॉक्स और अनबॉक्सिंग क्या होती है? ये अनबॉक्सिंग होती है हमारी, अनबॉक्सिंग int a equals int x equals to b a, int y equals to b, int z equals, int w equals to c, int z equals to d, ठीक है। तो int नहीं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कर देते हैं, कोई नहीं, चलता है। Equals D. Again, this is autoboxing. We're wrapping up a Christmas present. We're wrapping up a primitive within an object, and then unboxing is removing it. We're opening the Christmas present. Now, these wrapper classes themselves do have some pretty useful utility methods that are static. Let me demonstrate a few you might be interested in, but there would be too many to cover in just this one video. If you ever need to convert a primitive data type into a string, there's a two-string method of these utility classes. So let's say we have string A, string B, string C, and string D. I can convert an integer into a string using the integer wrapper class. It's accessed statically, so we type the name of the class, integer, call the toString method, which is static, and then pass in an integer like 123. So let's do this with a double. We will access the double wrapper class, call the toString method, and then pass in a double, 3.14. Then to convert a character to a string, we would use the character wrapper class, character, toString, and then pass in a character, and then boolean. We will access the boolean wrapper class, call the toString method, and then pass in a boolean. वाह, ई एफ जी एच कर देते हैं यार, ई एफ जी एच। स्ट्रिंग एफ, इंटीजर डॉट डबल डॉट टू स्ट्रिंग equals to 3.14, string g equals to
कोई नहीं, कैरेक्टर स्ट्रिंग $, $, gh string h is equals to boolean dot to string चलो ये हमारा So हो गया। strings can be concatenated together. We should be able to do the following. Let's say string x equals a plus b plus c plus d. And then we'll हाँ include जी, our variable x's. ठीक है। We get 1, 2, 3, 3.14 at false. Oh, It's all कुछ one long इंटरेस्टिंग है string. यार, It's because we बहुत इंटरेस्टिंग था। लेट्स सी। String x equals to e plus f plus g plus h. e f g h i आता है ना, ठीक। स्ट्रिंग k कर देते हैं। अब स्ट्रिंग str कर देते हैं। स्ट्रिंग s कर दें, i कर देते हैं यार, i। हाँ, मतलब कंफ्यूज हो गया था थोड़ा नामों में। नहीं 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 रन नहीं रन नहीं रन नहीं रन नहीं, यहाँ पर हमें टर्मिनल चलाना होगा। टर्मिनल चला के जावा wrapper डॉट जावा 1 2 2 3 1 2 3 $1.14 सही है। बहुत सही स्ट्रिंग आई है भाई, मतलब बहुत ही यूनिक टाइप की। ऐसा कोड वर्ड वगैरह पासवर्ड लग जनरेट हो गया, मजा आ गया। ऐसी पासवर्ड जनरेट करो, मजेदार। ट्रू ट्रू use these wrappers. कतई ट्रू भाई भाई। Classes to convert these primitive data types into strings. If you ever need to convert a primitive to a string, then use that primitive data type's wrapper class and call the toString method. Then you just need to pass that value in as an argument. Then it's going to spit out a string for you. Now, on the other hand, to convert a string to a primitive data type, there's another useful utility method of wrapper classes. So what we'll do is parsing. We will have an int of a double of b, a char of c, and a boolean of d. Int a will equal, we're going to call the integer wrapper class, call a static method of parse int. We can convert a string to an integer. I will convert a string of 123 to an integer. Now with doubles, we call the double wrapper class, and we will parse a double. We'll pass in a string of 3.14. Now characters don't have a parse method. What you can do instead is with any string, let's say we have a string of pizza, strings do have built-in methods, one of which is the char at method. Return the character at the first position, where index is 0. Again, character doesn't have a parse character method, so you would have to use char at, which is unrelated to wrapper classes. So then with the boolean, we would access the boolean wrapper class, called the parse boolean method, and we can convert a string representation of a boolean, such as true, into an actual boolean. वाह, ये बड़ा काम आएगा, कोई एरे मिलेगी, ये सब मिलेगा तो। अब यहाँ पे पार्स पे जाते हैं। JKLM, हाँ, int j equals to integer dot parse int 1 2 3, int k equals to double k equals to double dot parse double 3.14, और यहाँ स्ट्रिंग होनी चाहिए, यहाँ स्ट्रिंग होनी चाहिए भाई।
स्ट्रिंग होनी चाहिए, सीधा डबल पास कर रहे हो। हाँ सही है, डबल के। और आ, और क्या हो सकता है भाई? और हो सकता है हमारा, हाँ, कैर एल, कैरेट। तो जैसे मान लो पिज्जा, पिज्जा ही बोला ना, पिज्जा डॉट कैरेट। शिवम स्नैक करने चलते हैं यार। और बुलियन एम जेके इक्वल्स टू बुलियन डॉट पार्स डबल। और हम ले लेते हैं ट्रू। पार्स बुलियन भाई, पार्स बुलियन और ट्रू। यहाँ हम कर लेते हैं ट्रू। ठीक है, बहुत सही। And let's up with them. Now we shouldn't be able to add these together, much like what we did when we used the toString method. For example, Ah. string x equals a plus b plus c plus d. This isn't going to work because we're mixing and matching different data types. And then if I was to output x, that would give us a compilation error. To convert a string to its primitive data type, there's various parse methods to handle that within our wrapper classes. It depends on the data type you're working with. There's a couple other miscellaneous utility methods within wrapper classes. I'll just cover two more. So let's say we have a char of letter. Pick a letter. I will pick the letter lowercase b. चलो guys, I'm going to use a print line statement. We can check to see if our letter actually is a letter. We can access the चलो। चलो अभी के लिए गाइस मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ। पता है थोड़ी जल्दी हो रहा है, पता है, लेकिन स्नैक भी हो रहा है ना गाइस, तो आज बंद कर रहे हैं यहाँ पर। कल कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, बाय।